Good morning. Today we'll start Dihybrid cross and Mendelian deviation. Okay. The filing come up with. Yes. Good morning. In the last class, we have read about monohybrid cross, Mendelism, test cross, back cross, and some problems related to genetics. Okay. Now we'll read deviation from Mendelism, that is monohybrid cross deviation, and then we'll go for dihybrid cross, and at last again we'll solve some of the questions. Clear? Okay. Today very less students are coming because of holidays or something. Raja, happy Raja anyway. Okay. One deviation from Mendel's monohybrid cross is incomplete dominance. Write down. It is called incomplete dominance. Generally, Mendelism is complete dominance, but here it is incomplete dominance. Have you written the heading incomplete dominance? Sujismita, Sasi, Vijayalakshmi, have you written? Okay. How it is deviation from Mendelian concept of dominance. In Mendelian concept, capital T is greater than small t, correct? Means you will get pure tall or pure barb. You will not get anything in between. But here you will get in incomplete dominance, you will get in between structures. So can I say incomplete dominance as blending inheritance? बताइए, can I say it is blending inheritance? Yes, it can be called as blending inheritance. Write down. It can be called as blending inheritance. You can talk to me also. Nobody is silent. Vijayalakshmi, can you talk? Jayasri, Dileshwari, Mariam, Shruti, Suchasmita, can you talk? बात कर सकते हो कि नहीं? ऑन करके बात कीजिए तो समझते कथा हो तब आरंभ करिए क्लास. शीतल, जानकी कथा हो. Unmute and talk.
Okay, okay. I'll check. Now you talk. Yes, sir. Okay, okay. So today we'll go for, because less number of students are there comparatively, then in comparison to our last class. That means because of Raja or something, you might be busy. But anyway, we make it more interesting by unmute yourself and talk to me. So in the first class, we have retained tall is dominant over dwarf. Either tall will be there or dwarf will be there, correct? But here we'll find in incomplete dominance, blending inheritance, that is also called blending inheritance. You'll get in between character, in between characters. Tall is completely dominance over dwarf. It is complete dominance and recessive. But here, in between character will get, that means the dominance is not 100%. Got? Now the second part I यहाँ पर लिखिए, when experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had phenotype मतलब external expression जोड़ा कहते that did not resemble either of the two parents that was in between the two. Okay. तो आपको क्या लिखना है? In between the two. Write down this line, and that is called incomplete dominance. Incomplete dominance is not codominance, correct? Why incomplete dominance is not codominance? Why incomplete dominance is not codominance? Because here you will find in between character, not both the characters. Okay? So it is not codominance, it is something different. It is in between the parents. Okay? Suppose parents is red flower and white flower, then it is in between, and that is pink flowers. First line over. This line over. We are taking class. We are not giving lecture only. तो आपको notes लिखना है. Okay? All of you are ready with pen and paper. समझते लिखो. Incomplete dominance. That is the deviation from Mendelian concept of dominance. Heading over. This line over. Yes, sir. Okay. Now, good example to understand the incomplete dominance is the color of flower in dog flower, that is also called snapdragon. Okay. ताको हमें botanically कहती Antirrhinum majus. ठीक है जी. तमें को common name लिखाओ. तापरे हमें लिखियो तारे botanical name. Good example दिया. Good example. Even it is reported in Mirabilis jalapa also. There is a plant called 4 o'clock plant where you will find also. Okay. So write down the example is color of the flower in dog flower or snapdragon. What is the scientific name of snapdragon? Okay. I told you Antirrhinum majus. So write down. This is very, very important. Antirrhinum majus also will write. This is very important. It's there in NCERT book, and we have to remember. Clear? Perfectly लिख लीजिए सभी बच्चे. लिख लो. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Okay. Antirrhinum majus. What is the botanical name of dog flower? A snapdragon. Sasi, what is the botanical name? You can speak also. Antirrhinum majus. Okay. Can you give me one more example? Another example is Mirabilis jalapa. जाको हमें 4 o'clock plant कहती. ओडिशा रे 4 o'clock plant बोली जाको कहती ना.
red and white in between color देखा जाए pink flower. This is another रंगणी तक कहती. ओडिशा तक कौन कहती रंगणी 4 o'clock another example है ना. लिख लो समझते 4 o'clock मिराबिलिस जालापा. अब नेक्स्ट पेज को जाऊची. एटी रेड एंड व्हाइट रो क्रॉस हला. रेड मिलिया कथा ना व्हाइट मिलिया कथा ना पिंक मिलिया कथा को रेड एंड व्हाइट रो क्रॉस हला. जनरली मेंडेलिज्म ने कौन मिलिया कथा रेड एंड व्हाइट रो क्रॉस हले रेड मिलिया कथा. इन एटी मिडिला कोन पिंक. तो तम खाली रेड एंड व्हाइट लिखो एंड ता तळे लिखो F1 जनरेशन ने पिंक. क्लियर हला. मटा केंति लिखि दोची एटा हला पेरेंटल जनरेशन. ठीक अछि. एटा हला पी. पी माने कोन पेरेंटल जनरेशन. तो फिर पेरेंटल जनरेशन ने तुम कौन मिला पी माने पेरेंटल जनरेशन रेड प्योर रेड एटा होमोजाइगस. व्हाइट मिला पेरेंट्स गोटे व्हाइट भी मिला जे कि प्योर होमोजाइगस. किंतु पिंक F1 जनरेशन रे तुम कौन मिला पिंक. पिंक हला हेटेरोजाइगस. एटा प्योर नो. किंतु हेटेरोजाइगस रे रेड हवा कथा किंतु हेला कोन पिंक हेला. So just complete like this. Pure माने homozygous. Pure रो माने कौन कहतिली true to its breed. Homozygous. Pure माने homozygous. Pure plant how will get? Last time I told you by repeated selfing. ହେଲା. Pure plant केमति पाइबो by repeated selfing. Pure plant केमति पाइबो by repeated selfing. तले हमें pure plant पाइले. Let it be this is RR. Let it be this is WW बा smaller भी कर पारो. Pink रे कौन हबो RW and it is heterozygous and that is not red. That is pink in color. Correct? But can you tell me one important point? The recessive parent having more influence or the dominant parent having more influence? It is a blending, no doubt. It is intermediate character, but it is a blending towards, little more blending towards dominant character. Can a white upper color tique na tique asuchi, and therefore it is more blended towards dominant character, but it is not fully dominant. It is not 100% dominant. It is in between. Okay, very good. Agu jiba. एमती करो पिंक. जदि हमें F1 को सेल्फ पोलिनेटेड करिबा तले F2 रे are you getting all pink or you are getting red also, white also and pink also? Are you getting me? Pink ro selfing kariba. So first you write it and then we'll draw the structures. Red flower and white flower ro हमें क्रॉस करके हमें कौन पाइले पिंक फ्लावर पाइले. किंतु फिर तादरे सेल्फिंग करा जाए. F1 ने कौन करा जाए सेल्फिंग करा जाए. So we'll go for selfing. एटा कौन कहती हम selfing कहती. माने पिंक क्रॉस्ड विथ पिंक माने पिंक सहित पिंक रो क्रॉसिंग हैला. Then in F2 generations you will get red, pink and white. लिखी दियो. In F2 generation we will get red, pink and white in the ratio 1:1. So see done. The phenotypic ratio and genotypic ratio, is it same or different? जदि हमें red 1 पाइले, pink 2 पाइले and white 1 पाइले, RR are smaller. That means genotypic ratio
is same as phenotypic ratio. How many genotypes you are getting? Generally 3. How many phenotypes you are getting? Usually 2. But here, genotypes also you are getting 3 and phenotypes also you are getting 3. The genotypic ratio is same as phenotypic ratio. Done? Yes, sir. Complete this. Complete this and then we'll go to next level. Okay. You can see the parental generation like this and F1 generation like this and F2 generation male gamete and female gamete like this. And then the ratio is 1 to 1. The phenotypic and genetic ratio is same and that is 1 to 1. You make it like this. RR, RW, what I told, RR and small r is 1 to 1. Correct? This is the genotypic ratio. Red, pink, and white. What is the ratio? 1 to 1. It is the phenotypic ratio. And this is genotypic ratio. So you make this like this. Very good, Sasi. Complete हो गया सबका? Okay. Generally, phenotypic ratio is 3:1, but here it is 1 to 1. Correct? 3:1 is converted into 1 to 1. Correct? And phenotypic ratio is same as genotypic ratio. ठीक है? ओके. तो आपको मैं एक मेंडेलियन पॉइंट्स में आपको बताता हूँ. ओके? Mendelian's dihybrid cross, trihybrid cross, do you know? So we'll make it. मैं आपको एक पॉइंट्स बताता हूँ. इसमें आप लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे so that एक सेकेंड. एक सेकेंड मैं आपको डाइहाइब्रिड
क्रॉस का थोड़ा डायग्राम्स बताता हूँ, आप उसको बनाइए तो एक साथ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक टेबल बनाइए। So you people make this cross. इसको बनाइए। Have you done that? Dihybrid cross. Have you done that? ये कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीट हो गया था। पिंक, ये कंप्लीट हुआ था आपका। This line also over phenotypic and genotypic ratio. But when I told you to draw the dihybrid cross, very good. Many of you have done this because I have taken small break. तो मैं बोला कि एक बार बना लीजिए, अरे बनने दियो, आउ फिर बने पे कही भी फेरे। फिर बर्तमान आमे फिर पळे आसले हमरो कोटी को phenotypic and genotypic ratio in F2 progeny are the same, and that is incomplete. That is incomplete dominance. Hala? Now tell me, what is the scientific name of snapdragon? What is the scientific name of snapdragon? Tell me.
Sasi, can you tell me what is the scientific name of snapdragon? Quick. Datura, Indigofera, Antidinum, Sasvania. Suchismita wrote. Any other? Yes, Vijayalakshmi, Jagdish. Very good. The answer is Antidinum majus. Oppo, आपका नाम लिखिए. Oppo A16. Very good. Of second point लिखिए. What is the phenotypic ratio in incomplete dominance? Is it 1:3? Sasi also correct. Mariam also correct. Suchismita, what's the answer? Very good. Anybody? Mariam? Okay. This is 1:1. Each phenotypic ratio is same as genotypic ratio. Each phenotypic ratio is same as genotypic ratio. Bolo. Each phenotypic ratio same as genotypic ratio. Yes. Phenotypic ratio same as genotypic ratio. तो आपने लिखा आंसर. Very good. Phenotypic ratio same as genotypic ratio. Now come to codominance. Heading दीजिए. If in between character is coming, it is called incomplete dominance. But if both characters are retained, है ना, ताले तो कमी कहबा codominance. जेंति कि blood group AB, blood group A and B, AB बन्ना होची धरो. ताले AB टा कौन हबो? Codominance हबो, है ना? जतरे both the characters are retained. धरो हमें धोला कोला रो crossing करले, कोला धोला रो patches आसिला. ताले तो हमें codominance कहबा. किंतु कोला धोला रो in between color जदि आसिबो, ताले तो हम कौन कहबा? Incomplete dominance. The dominance is a relationship between two versions of a gene. Now, what is codominance? In case of codominance, F1 generation rejects both parents. In case of incomplete dominance, F1 generation is not resembling either of the parents. In between character is coming. But here, it is both characters are coming. Got? Write down some of the examples. FBO blood group and seed coat pattern and size in lentil plants. I have given two examples. One is animal or human being, and the other one is plant. So I have given two examples. You just write down, but we'll go for only one example, no problem. Okay? So this part is over. I've written the entire thing. Codominance कहाँ पर मिलता है? सबको मिल गया? आंसर मिल गया? कहाँ पर मिलता है? Can any of you tell me? Codominance is reported where? Okay. आगे चले? सुचेस्मिता, आगे चलते हैं? Yes, sir. Okay. Suppose they will be crossed, white and colored. In between patches you are getting. So this is also another example of codominance. Correct? तो एक example आप देख लीजिए. FB blood group, FB जोड़ी पाउच. That is the example of codominance. खाली जानिए पे चित्र देखिए ला. Is it deviation from Mendelism or not? Is it deviation from Mendelism or not? It is the deviation from Mendelism, correct? It is the deviation from Mendelism. आगे चलते हैं. In the cattle and horses, if you cross a pure red with a pure white, you get RW, which produces the color roan. आमे कहीं की incomplete dominance रे small r लिखिदिले तम जेतले दिटांकर character आसुनी किने एठे दिटांक आसुची तनो RW आमे नेले एठे हला, which produces the color roan. So this is also another example of codominance. ना लिखि देई पारो. आगु जिबा.
समझ देखाउची आगु जिबा Yes, sir. there is another deviation from Mendelism and that is called pleiotropy. आमे Mendelism रे कौन कहतिले Mendelism कहतिला one gene one character. One gene, one phenotypic expression. But this one is deviation or not? When one gene affects more than one character, then it is called pleiotropy. Then it is a deviation from Mendelism. If I'll say many genes are responsible for one character, if it is polygenic, but then that is also deviation. One gene, many characters. Deviation, many genes, one character, also deviation. So now we are reading about pleiotropy. First, we have completed incomplete dominance and codominance. In codominance, both characters are expressed. In incomplete dominance, blending occurs in between characters is expressed. Here, one gene, one character. No, here one gene, many characters. Got? If many genes, one character, that is also deviation. So this is also another deviation of Mendelism. Definition over. Occasionally, a single gene product may produce more than one effect, so that a single gene may be related to more than one character. This phenomenon is called pleiotropy. गोटे जीन रो किछि डिफेक्ट हेले जोटे डिजीज कला सेही डिजीज बहुत बड़े कैरेक्टर नै कि आसी पारे हला बेले बेले कोआ जाय जे धर जनकर गोटे टैलेंट जीन अछि कि मेमोरी भलो अछि ताले से बहुत बड़े बेटर एक्सप्रेशन आसी पारे हला तार सुनिबा शक्ति बढ़ जाय पारे मन रक्षा शक्ति तो अछि हला ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाय पारे रिकैप्चुलेशन आल्सो विल बी हायर तेणु गोटे टैलेंट जीन बहुत गुड़ाए फीचर्स भी देखई पारे लाइक दैट हियर आल्सो ए सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन one effect so that a single gene may be related to more than one character. This phenomenon is called pleiotropy. Clear? Pleiotropy bar question asichi and I expect this question again it will come because last time the question was many genes, one character. Okay, last time polygenic, which is deviation from Mendelism, and this one also deviation from Mendelism. Okay, okay. Single gene, multiple traits. Trait 1, trait B, and trait C. You write down like this. You'll find it more interesting. One gene responsible for many characters. Okay, one gene, Krishna, it is responsible for many characters. Okay, can all of you observe me? Can you see me also? The side screen में आप देख सकते हो, but आप main screen में इसको share कीजिए so that it will be better for you. Okay, ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको. और side screen में you can see me. Okay, very good. This diagram over, Krishna. I'm looking to you कि तमने कौन चैटिंग करूचो सेटा हम देखुची ना सुचेस्मिता ओवर वेरी गुड गोटे हमें सिंपल गोटे चित्र करिके बुझेइचे हला सो विभिन्न कैरेक्टर रेस्पोंसिबल सेमिति स्टार्च सिंथेसिस एटा लेख दिस इज very important point generally it is not given in your book. But starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene, and starch synthesis is effective when homozygous, and therefore the large starch seed grains are produced. The small b is the less small starch grain is produced. है ना? तो एक point लिखो.
capital B and small b upare is a points deichi lekha. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two alleles, capital B and small b. Over, and starch is synthesized effectively by capital B conditions or homozygous conditions. Therefore, large starch grains are formed. In contrast, small b is homozygous conditions, has lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. Got? Up to this, have you written? After maturation of the seeds, BB seeds are round. Clear hello? And the round seed कहले heterozygous condition जो diagrams बनेइथिले. Capital B कौन हैला? Round. And small b कौन हैला? Wrinkle. तो से जो diagram टा कितने बने थे? कहइथिले. फिर आउ थरे हम लोग बनेगा. ना? ये जाटा सल्ला. This point is over. The starch synthesis is indirectly controlling round and wrinkle also. Okay. Now, if it is capital B and small b, then it is intermediate type. Okay. If capital B and small b, it is intermediate type. So if starch grain size is considered as phenotype, then from this angle, it is incomplete dominance because we are getting round, we are getting wrinkle, we are getting larger, we are getting smaller, and we are getting intermediate also. So therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that is has information for it. One gene may have a lot of other effects also. Because here we are interested for size. तो साइज के हिसाब से इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस, बट शेप के हिसाब से यू हैव राउंड एंड रिंकल्ड. गॉट? Therefore, यहाँ पर लिखा है, it is only clear. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has the information for it. This point you write, and this is very important line. Last line. Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. बेड़े बेड़े हमरो गोटे dominant character खाइबा ऊपर भी depend करछि. Suppose capital T अछि tall plant, but you have given less food, then maybe stunted growth is there. Therefore, always we cannot say all the dominance is the autonomous feature of a particular gene. It may be the product, or it may be the external environment, or it may be many genes having one effect also, or one gene may control many effects also. It is strongly objecting Mendelism, both complete dominance, both incomplete dominance, codominance, and pleiotropy and polygenic inheritance. Got? आगे चलते हैं. So you can see capital B, small b, small b, small b. Even if we are getting round, okay. So as per our dihybrid cross, it is round, no doubt. But as per the size, it is in between. Okay. So round and wrinkle we are getting, but actually, as per size, it is incomplete dominance. As per shape, it is dominance. Got? Suppose समझ में आ गया? You can draw the diagram also if required. Very good. Sasi, Vijayla, Vijayalakshmi. As per
सेप जदि मु पचारिबी ताले एटा डोमिनेंस ना एटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जदि मु सेप पचारे then it is कृष्णा बुझला जदि मु सेप पचारली एटा डोमिनेंस ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेप हिसाब रे डोमिनेंस वेरी गुड सुचिस्मिता किंतु जदि हमें साइज पचारिबा ताले एटा डोमिनेंस ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो साइज रो हिसाब रे तीनटा शेप रो हिसाब रे दीटा जदि दीटा फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स थाए ताले हम ताको कोन कहंती कंप्लीट डोमिनेंस बा डोमिनेंस रिसेसिव किन जदि तीनटा फेनोटाइपिक कैरेक्टर थिबो ताले हम ताको कोन कहंती ताले हम ताको कहंती इनकम्प्लीट डोमिनेंस जदि लार्ज मीडियम स्मॉल रहिला ताले हम ताको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहबा जदि राउंड एंड रिंकल रहिला ताले हम ताको डोमिनेंस कहबा I hope you people understood this. Okay. Best example for codominance. Can any of you tell me best example of codominance? Okay. बताओ आंसर बताओ. Codominance. Yes. Blood group of human being. AP blood group. Correct? Okay. Very good. समस्त ହେଇଗଲା ଏ क्वेश्चन ଟା आगो जाउची फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है हाइट ऑफ पी प्लांट है डोमिनेंस एंड ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन कोडोमिनेंस एटा तुमको मु पढेइची किंतु इनडायरेक्टली पढेइची को ओनली पैटर्न ना ओनली साइज ना बोथ एटा लिखि दियो द क्वेश्चन दा समस्त लेखो ना एटा हम चित्र करनथिले बट हम एग्जांपल देइथिले तेनो समस्त ई क्वेश्चन दा लेखो क्लियर हैला समस्त ई क्वेश्चन दा पूरा लिखि दियो इट मे बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोडोमिनेंस इन lentil shows size of the seed shape of the seed कणव seed coat pattern and size the माने both 1 and 2 okay lentil बेली जो गच्छ कहले तार बोटानिकल नेम कोन लिखि दियो लेंस कुलिनारिस पीरा तो जानि दिलो पाइसम सटाइबम संति एटा ए गच्छर बोटानिकल नेम हला no fasciculus no one of Vijay you are answering the last question I think na a question answer likhi diyo direct 131 what is the scientific name of lentil hela Vijay Lakshmi yes lens culinaris fasciculus mungo mane kon jancho mugo no biri जो ऑप्शन 4 देछि फासिलस मुंगो हमें कोन भाबिया जे मुंगो हितो ना एटा बिरी ब्लैक ग्राम हला मुंगो भूले त ना दियाइ छ म चाली चेज पर्यंत हला ओके व्हाट इज प्लियोट्रोफी कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज प्लियोट्रोफी Mariam, can any of you tell me what is pleiotropy? Option 1, option 2, option 3? Those will answer the very good. A single gene affects more than one character. Good.
Now, what is the explanation of the concept of codominance? It's important. Aku bujhega. Every gene contains the information to express a particular trait. Mendel was ignorant, correct? Mendel was thinking it is factor, but the modern scientists called Mendel's factor as gene. Gene is the segment of DNA chemically, and it is responsible for expression of a particular traits. In a diploid organism, there are two copies of each gene, a pair of alleles. Okay, because in diploid we have two genes. Then you can make it silent, Krishna, no problem. Okay. Take it. Write down this. Any of you, if you want to close your mic, you can close, and if required, you can talk, or you can chat also. Krishna, it's all right. Now come to the next part. Every gene contains the information to express a particular trait. Got a character pachare, got a gene, no? Got a gene achi. Gene माने DNA. DNA कौन करियो? RNA करियो. RNA कौन बनेबो? Protein enzymes से परे. এবং ସେମାନେ ଗୋଟେ particular reactions କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା character is expressed. So in a diploid organism, there are two copies of each genes, a pair of alleles. Correct? I mean, last class रे भी ଟିକେ idea ଦେଇଥିଲେ. Okay. Now, next part was now these two alleles need not always be identical. बेलेबेले ସେମାନେ heterozygous हुअन्ति, बेलेबेले ସେମାନେ homozygous हुअन्ति, ଆଉ बेलेबेले ସେମାନେ heterozygous हुअन्ति. ଏବେ ଯେତେବେଳେ heterozygous condition ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? That is the concept here. ହେଲା? ତାହେଲେ ଯଦି homozygous ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ. ଯଦି heterozygous condition ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ? Let's take an example. A gene that contains the information for producing an enzymes. Now there are two copies of genes, two allelic form. गोटे dominant, गोटे recessive आमे कहिथिले last class रे, गोटे wild, गोटे mutant कहिथिले. जदि normal alleles थिबो, से normal enzymes बनेबो, हैना? जोटा कि गोटे substrate को change करियारे help करे, हैना? ताले आउथरे देखो कोन लिखाइछि. How gene is expressed? Can any of you tell me? Gene माने कोन कहिथिली? DNA. DNA कौन बनेबो? RNA. RNA कौन बनेबो? Protein. Protein माने भी enzymes भी. Protein by enzymes. Enzymes are also protein. The protein बनेबो by enzymes बनेबो. Here let it be से गोटे enzymes बनौछि ना. DNA रो DNA बनिबाटा कोन कहନ୍ତି? Replication. DNA रो RNA बने RNA protein. एटा कोन कहନ୍ତି? Transcription. मु खाली transcription टा बे कहूछि. And RNA रो protein बनिबाटा कोन कहନ୍ତି? Translation. Na. A gene has the power to make an enzyme. Na. Now there are two copies of this gene and two alleles are there. The two allelic forms madhya achi. Diploid alle ditanga visu ditanga roi pare, alga alga roi pare. Na. Let us assume as is more common that the normal alleles produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. तर S को product रे convert करिया पई गोटे enzymes दरकार. असे enzymes ता से gene बनौछि हैला. बुझ पल्ला ऊपर लाइन ता लिखाओ. सेंट्रल डॉक हमें पढिबा molecular basis of inheritance रे. एबे तमे खाली ऊपर लाइन ता लिखाओ. सरिला कृष्णा chat please. तमे डाटा पके क्या सर कृष्णा?
theoretically the modified alleles could be responsible for production of कौन कर परिबे गोटे alleles modified हे गला धरो से modified हे गला तले से कौन करिवो तो the normal or less efficient enzymes either normal बनेबो maybe normal silent mutation भी हे पारे बा less efficient बनेबो बा non functional enzymes बनेबो बा no enzymes बनेबो ए कंडीशन रे कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर रहिबो बट ए कंडीशन रे रिसेसिव कैरेक्टर आसीबो एटा हो एटा हो इतरे टिके इंफीरियर कैरेक्टर्स आसीबो हला एटी डोमिनेंट कैरेक्टर रहिबो एटी रिसेसिव कैरेक्टर आसीबो हला मॉडिफाइड हेले भी जे सब बेले रिसेसिव हे जो समिति नो बेले बेले साइलेंट म्यूटेशन हुए जदि नॉर्मल एंजाइम से बनेला ताहले से साइलेंट म्यूटेशन हैला एंड दैट इज साइलेंट किंतु बाकी जो तीनटा कंडीशन रे इंफीरियर कैरेक्टर बा रिसेसिव कैरेक्टर आसीबो क्लियर हैला ए जाय ओके आगु जीवी लेखटा परफेक्टली शीतल श्रुति सुचिस्मिता संध्या डन जगदीश डन विरजा हैला ओके नाउ I mean next level ku jiba in the first case the modified allele is equivalent to unmodified why it will produce the same phenotypic traits kind of normal enzymes banichi la and the result in the transformation of the substrates both equivalent allele pairs are very common la tapor part ku chalo but if the allele produces less functional enzymes or non-functional enzymes or no enzymes, the phenotype may be affected. And the phenotypic trait will only be dependent on the functioning of the unmodified alleles. So last तीनटा जो कहितली समाने कहाँ पे डिपेंडेंट अछंती लास्ट तीनटा जो कहितली जबी less efficient हैला the no enzymes हैला or non-functional enzymes हैला correct the phenotypic trait write down this line quickly agu jiba the phenotypic trait the phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified alleles suppose gote modified achi gote unmodified achi the less efficient भी sei paribo the unmodified alleles which represents the original ठीक अछि the unmodified allele which represent the original phenotype is dominant alleles and the modified alleles is generally the recessive alleles eta ame aro class re bhi bujheitile last class re now are you ready for question answer unmodified को कौन कहबा the original phenotype को कौन कहबा the wild को कौन कहबा
कौन कहवा डोमिनेंट and the modified को कौन कहवा रिसेसिव यूजुअली कह जाए हला कारण जदि नॉर्मल इंजिन्स बनेबो तो हमें देखि परिबेनी हला ओके which are not always be identical two genes two alleles two character none of these कहि पारो बा लिखि पारो कोटा आइडेंटिकल नो usually write down any of you can assume the answer okay two alleles Suchesmita correct Vijay Lakshmi correct Mariam correct Hello? Okay. Capital T, small t are two alleles. Less functional enzymes. The phenotype may be affected, genotype may be affected, phenotype may not be affected, genotype may not be affected. What should the answer? The phenotype will be affected. Write down. Already you have written, Suchesmita. I think this one you have written. Vijay Lakshmi, done. आगे लेते हैं. Now we'll go for inheritance of monohybrid cross of Saturday. Now we'll go for inheritance of two genes. And when we are talking about inheritance of two genes, then it is called dihybrid cross. In dihybrid cross, two contrasting two characters are taken. जदि हमर एटा two characters हबो, suppose two characters you are taking, that means how many traits you are taking? If you are taking two characters, that means how many traits you are taking? 4 traits you are taking. Two characters means 4 traits, contrasting traits. Okay. Then how many F2 generations you will get? 3:1, 3:1 multiply kariba 9, 3, 3, 1. तमें चारिटा features हम पाएगा. Genotypes also you can get 1:1, 1:1 multiply kariba 1:1, 2:4:2, 1:1 like this. Okay, the ratio. এটা আমি আগুরো আর ক্লাস রে কইতলে এদের আমি পাইবা চারিটা phenotypes and 9টা genotypes in F2 generations. Let us see whether we are getting this or not. Tell what are the characters taken? Seed color and seed shape. गोटे क्रोमोजोम नंबर 1 रे अछि गोटे क्रोमोजोम नंबर 7 रे अछि तेणु तांको भितरे लिंकेज हबनी हैना तांको भितरे लिंकेज हबनी
In one dihybrid cross experiment, Mendel studied the inheritance of seed color and seed set. The alleles for yellow color, capital Y, is dominant to the alleles of green seeds, small y. ठीक है जी? इधर लिखो कैपिटल Y है येलो कलर, स्मॉल y है ग्रीन कलर. जदि सीड शेप को नबा तले कैपिटल R है राउंड and small r है wrinkled. ठीक है जी? तो ये दीटा पॉइंट्स लिखो. गोटा कौन मन अच्छी? कैपिटल R कौन राउंड, स्मॉल r कौन wrinkled. So we have written these 2 points only. Now, parents will be like this. Capital R, capital R, capital Y, small r, small y, small y. So this is the parental generation, and parental generation is always like this. Round yellow and wrinkled green. This is parental generation. It is homozygous. This is homozygous. This is also homozygous. That is parental generation. We are getting this by repeated selfing. Now, what type of gametes you'll get? You'll get here, there is no heterozygosity. To the power 0, 1, here also there is no heterozygosity. Therefore, only one type of gamete you are getting. There is no heterozygosity. Formula I told you, na? To the power n. There is no heterozygosity. To the power n is the number of heterozygosity. The no heterozygosity will get like this. Okay? Now, in F1 generation, you'll get like this. So this is heterozygous round yellow. Write down, this is heterozygous round yellow. Mariam done? This is F1 generation. What is F1 generation? I told you last class. Fast filial generation. Fast filial generation means fast progeny. Completed? Here you will get round and yellow because in heterozygous conditions, round and yellow color, which are dominant characters, dominant traits, are expressed. Now this one you made. How can you say it has all these features? Because the F1 generation is RR, YY. How many heterozygosity? To the power n, that is to the power 2, and that is 4. Therefore, once you are getting 4 type, capital R, capital Y,
capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Here also you're getting male. Suppose this is male and this is female. Male also you're getting 4 types of gametes. 4 into 4, 16. 4 into 4, getting 16 types of genotypes. Then this one you make, also will make like this. Remember, these 4 are F1 type, heterozygous, these 4. And this one like parental type, these 2. And these 4 are homozygous, maybe dominant, maybe recessive. So you make these diagrams. Already you made this, na? Sorry, Bonitilo. ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ କରିଛି ତମେ ଏଟାକୁ କଣ କହିପାରିବ ରାଉଣ୍ଡ yellow ଏଟାକୁ କଣ କହିପାରିବ ରାଉଣ୍ଡ yellow ରାଉଣ୍ଡ yellow ରାଉଣ୍ଡ yellow ଏଟାକୁ କଣ କହିପାରିବା ଏଟା green wrinkle so you can understand which is round yellow ମୁଁ ବତେଇଦେବି ତମକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା how will count the genotype ବତେଇଦେବି ତମକୁ so round yellow ହେଇଗଲା Now the question is how to count all these things. केमी जानिबा एक तो एटा रो हम एटा बने दे परिबा आर फार्मूला हला ए जो चारिटा एटा F1 जनरेशन भलिया तले मो एठी करूची हमर जेनोटाइप हला 1 2 1 तापरे कहतिली कोन 2 4 2 तापरे कोन कहतिली 1 2 1 हला केमती करतिली ना 1 to 1 रे मल्टीप्लाई कर देतिली हला ए जो 4 टा F1 जनरेशन भलिया तले केमती हबो ए जो 4 टा F1 जनरेशन हमें कोन करतिले वो F1 जनरेशन हमें कोन करतिले तो F1 जनरेशन हमें कोन करतिले F1 जनरेशन हमें करतिले RRYY हला F1 चारिटा ए जो चारिटा तनो काउंट हे परियो तापरे ए चारटा 1 1 1 and 1 तले A1 टा कोन नेबी RRYY अरे A1 टा कोन नेबी कैपिटल R स्मॉल y A1 टा कोन नेबी स्मॉल r कैपिटल Y और A1 टा कोन नेबी स्मॉल r y ए चारटा 1 2 3 4 क्लियर हला बाकी कोनोसी जिंस 2 रो अधिक नो 2 2 and 2 आगामी 1 गुडा लॉक कर देले 4 टा लॉक कर देले बाकी सब 2 तले A2 टा कोन होबो ना ए दिटा तले R Y स्मॉल y A2 टा कोन होबो ना ए दिटा होबो तले कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y A2 टा कोन होबो ना ए दिटा होबो तले ए दिटा कोन कैपिटल R स्मॉल y A2 टा कोन होबो ना ए दिटा होबो तले स्मॉल r capital Y small y so in that way we can get the answer Lopamudra you got the idea first हमें एटा जोड़ा करथिले F1 जनरेशन सेटा हम क्लियर करली तापरे एटा गोटे थाए गोटे जोड़ा होमोजाइगस जोड़ा क्लियर करली होमोजाइगस रो एटा भी होमोजाइगस डबल
एटा भी होमोजाइगस किंतु गोटे डोमिनेंट गोटे रिसेसिव एटा भी होमोजाइगस गोटे रिसेसिव गोटे डोमिनेंट एटा भी होमोजाइगस एटा डबल रिसेसिव हला आ बाकी जोडा हमें कहले सेगुडा तमे मन रखिया पड़ियो कने 2 रो अधिका किछि हेई परिबो नाही क्लियर हेलो लोपामुद्रा क्लियर आगु जिबी एजम पिलांगर कोन क्लास अछि आज स्कूल ले कोन क्लास आज तो नथिबो अछि ओ आगु जाउची एटा डायग्राम ओवर आगु करा हितला तम काम देइतिली आ एपी जोटा बतैली बुझेला बतन एथु हमें कंक्लूड कोन करिया हला फेनोटाइपिक रेशियो ला 9331 जेनोटाइपिक रेशियो कोन कहतिली मु 1:1 आकु टिके चेंज कराई कि लिखाई छी किंतु मु जोटा कहतिली सेटा बेटर वे कोन लिखिबा 1:1 2:4 1:1 रेशियो हमें बे देखैले रे जोटा देखैतिले ना आ 9331 ने हमें कोन लिखिबा फर्स्ट को समझते 9 कोन राउंड येलो कोठी अछि देखो ए सबुडा 9 हला सेकंड टा कोन कहले हमें राउंड ग्रीन थर्ड टा कोन कहबा रिंकिल्ड येलो एंड फोर्थ टा कोन कहबा रिंकिल्ड ग्रीन हला चारटा लेख राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकिल्ड येलो एंड रिंकिल्ड ग्रीन ना एटी देखो ए जो तीनटा हमें देखुचे एटा एटा एंड एटा तापरे ए तीनटा हला एटा एटा एंड एटा एटा एंती करो ए तीनटा पाखा पाखी so in that way also you can get the phenotypes clear hello आगु जीबी now here we are observing some new phenotypic expression 3 and 3 the parental no ho chota noa expression am pauche yellow green ame 3:1 पाइचे राउंड रिंकल भी हमें 3:1 पाइचे हला किंतु केते गुटे न्यू कॉम्बिनेशन आउदा हमें पाइले हला केन जदि हमें 3:1 देखिया गोटे पर्टिकुलर कैरेक्टर सेटा ठीक अछि येलो ग्रीन केते 3:1 राउंड रिंकल केते 3:1 जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किंतु केते गुटे हमें न्यू कैरेक्टर देखिले सेटा को हमें कहते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट तले इट लेखो दिस लॉ can be concluded from dihybrid cross only. It can be framed from dihybrid cross only. Now you write in the dihybrid cross the phenotypes round yellow, wrinkled yellow, and round green and wrinkled green appeared as in what ratio? For in what ratio you are getting all these things? In 9:3:3:1. Now here you are getting some new phenotypes. What are new phenotypes ko? Na round yellow to amara thila, but wrinkled yellow jo asila seta gote new phenotype. Na round green jota आइला सेटा गोटे न्यू फेनोटाइप तामने न्यू combination of traits केतेटा में पाइले 6टा
out of 16. Total केते थिला 9331 तर total टा हला 16 किंतु ता भितरे 6 हला new combination of traits. The ratio of 9331 can be derived as a combination series 3:1 green with 3 round 1 wrinkle तार मिसिकेटा हेची किंतु जो न्यू कैरेक्टर हम पाइले सेटा छोटा पाइले एजा हला मरियम डन लोपामुद्रा न्यू कॉम्बिनेशन हम कितना पाइले छोटा पाइले आउट ऑफ 16 9 yes now we'll go to next level na this derivation can be written as like this. In other words, round yellow जदि आम नबा गोटाए रे आम केते पाइथिले 3/4 आरबी 3/4 ताले मल्टीप्लाई कर देले 9/16 रे हम पाउचे हला केना राउंड आम पांच केते f2 जनरेशन रे जदि आम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करथांते f2 जनरेशन केते पाइथांते 3/4 पाइथांते 75%. येलो केतेटा पाइथांते 3/4 तो जदि आम मल्टीप्लाई कर दबा ताले आम पाइले 9/16 both round yellow and paile 8 round. In that way also you can conclude it is 9/16. So you point lekho eta the follow points. Santi wrinkle yellow ame kete paanti 1/4 wrinkle kete paanti 1/4 yellow kete paanti 3/4 jodi akku bhi multiply kar daba will get 3/16 bujela. राउंड ग्रीन केते पांते राउंड केते पांती f2 जनरेशन जदि गोटे मोनो हाइब्रिड नै थांते 3/4 पाई थांते ग्रीन केते पाई थांते जदि मोनो हाइब्रिड नै थांते ग्रीन का तो रिसेसिव 1/4 पाई थांते तो एटा जदि मल्टीप्लाई कर दबा ताले वी विल गेट 3/16. ग्रीन तो रिसेसिव कैरेक्टर केते पांती 1/4 wrinkle भी गोटे रिसेसिव कैरेक्टर केते पांती 1/4 into 1/4 करले 1/16. So you can conclude this calculation like this also. Mariam hela Vivo very good. A probability ta multiplication प्राय जगह रे कहंतिनी but you can get the answer like this. Now ए पार्ट में पढ़ाई सारछे है ना एटा तो हमर एनसीईआरटी रे एटी 1/4 देछि then we can get the answer like this है ना ताकि तुमको सुविधा हो ए बाटे भी कोटे this is another approach to get it ना तो एटा आउ गोटे डायग्राम रे भी बुझेछि जे कैपिटल Y डबल डोज रे हो कि सिंगल डोज रे हो येलो राउंड येलो हबो कैपिटल R डबल डोज रे हो कि सिंगल डोज रे हो येलो राउंड हबो से रिकमेंडेंट भी बुझेछि मो इतरे एवं टोटल सबतक सीट कलेक्ट करले वी कैन गेट द तले बर्तन बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल proposed another generalization and that is called Mendel's law of independent assortment. Yes Sangeeta na Mendel's law of independent assortment samaste lekho. This law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character. When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character.
जमिति कि आमे पाइथिले जदियो हमर थिला येलो राउंड बट आमे येलो रिंकल पाई परथिले जदि हमर थिला रिंकल ग्रीन बा ग्रीन रिंकल आमे आ गोटे न्यू कॉम्बिनेशन भी पाइथिले है ना तो इन दैट वे इट इज रिटन येलो सहित येलो कलर्ड सीड सहित रिंकल आसी परिबो हैला and green सहित राउंड भी आसी परिबो The Punnett square can be effectively used to understand the independent assortment. हम जोटा पढ़ी थिले बे हैला Punnett square त कहंती बा चेकर्स बोर्ड भी कहंती आमे F1 जनरेशन केवल राउंड एंड येलो पाइथिले हैला किंतु आमे गैमेट्स आर प्योर त कैपिटल आर स्मॉल आर अलगा हे गेले समथि कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलगा हे गेले तेणु आमे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर मध्य पाइथिले फोर genotypes of gametes आमे पाइथिले ए टाइप रो हला 25 each ता सब पढ़ा हिची हला से जो डाइहाइब्रिड क्रॉस रो F2 जनरेशन रे आमे ओडा सब लिखि छे खाली परसेंटेज आमे लिखले ताहले आमे न्यू कॉम्बिनेशन पाइले एबे एटा करले तम बुझी परियो जति तमे टू कैरेक्टर्स यू आर टेकिंग ताहले ताको आमे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करबा ना डाइहाइब्रिड क्रॉस करबा संगीता डाइहाइब्रिड क्रॉस करबा ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस करबा समझते लिखो मरियम संतोषिनी कनाबो two characters you have taken, four contrasting traits you have taken, then what should be the answer? Dihybrid cross होगा कौन सा? ये आंसर कौन दो ना? आगु जाओ जी. आसिला आसिला. Mendel studied the inheritance of dash. Yes, Sangeeta, good. Easy question. Eta ko. Nupur also correct. Mendel studied the inheritance of seed size only, dihybrid cross line. Flower color only, seed shape and seed color, flower shape. What he studied? So, only seed size, only flower color, seed shape and seed color, na flower shape. आमे जदि कहबा राउंड एंड येलो तो सेतु जणा पड़ची गोटे क्रोमोजोम नंबर 1 रे अछि आडे क्रोमोजोम नंबर 7 रे अछि कलर अछि 1 रे शेप अछि 7 रे तले थर्ड आंसर आसीला वेरी गुड यस संगीता नुपुर बुझेला ओके आगु जीबी Y is dominant on dash. Y is dominant on dash. Yellow color कहाँ पर dominant? Alleles of red seed, alleles of yellow seed, alleles of green seed, alleles of round seed. Write down. Kuda hobo. Alleles of green seed. Y is yellow. Nupur correct, Mariam correct, Sangeeta also correct.
Santosini Rath also correct. Agu jauchi. You know this. In dihybrid cross, the phenotypic ratio is a dash. It is slow route bote. So 20 later पहुंचू तुम वगैरह. Yes, Sital. Very good. Okay. Very good. All are correct. Punnett square is very effectively used to understand. All the laws are correct. But most important is independent segregation of two pairs of genes. Law of independent assortment कहले भी चलिबो ना, किंतु clarity बेसी अछि fourth रे. Okay. आमे जतरे chromosomal theory of inheritance कहंती सत्तबेले हमको बुझिया पड़िबो जे गोटे जीन एंड गोटे कैरेक्टर अलगा अलगा अछंती ना एकाठी अछंती. सत्तबेले आमे क्रोमोसोम एंड जीन बुझे करिया हला. एटा देखंती एटा गोटे पेयर ऑफ जीन्स एवं आप ऊपर रे ए जोटा गोटे क्रोमोसोम रे अछंती. Suppose this is chromosome number 1 and eta 1 and 1 prime, paternal and maternal. Au gote chromosome nele 2 and 2 prime and ethi suppose p and small p achanti. Tale a gene jaha a chromosome ro inheritance jaha a gene ro inheritance seya. Au a chromosome ro inheritance jaha a gene mananकर बा alleles mananकर inheritance seya. कारण गोटे क्रोमोसोम रे गोटे क्रोमोसोम पेयर रे गोटे जीन पेयर विषय में कथा होचे. गोटे क्रोमोसोम पेयर रे गोटे जीन विषय रे जीन पेयर विषय रे कथा होचे बा alleles विषय रे कथा होचे. किंतु एक्चुअली यदि सेम क्रोमोसोम रे दीटा रही जिवे ताहले एठी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समान होबनी हला. किंतु यदि गोटे जीन पेयर एंड गोटे क्रोमोसोम पेयर रिप्रेजेंट करूथबो गोटे क्रोमोसोम गोटे जीन पेयर ताहले से दिटा समान. मेंडेल एई भले भाबितिले हला. Mendel published his work on inheritance of character in 1865, but it remains unnoticed till 1900 because of the following reasons. Satale communication ete proper nathila. Mendel was beyond his time. Darwinism be satale छाई देथिला हला. तेनु तांकर concept विषय विषय बेसी जानी नथिले. को विषय जीन्स विषय विषय जानी नथिले. से खाली कहले जे समथिंग इज देयर कॉल्ड फैक्टर हला व्हिच डिड नॉट ब्लेंड भी कहथिले. एबो ब्लेंडिंग तो होथिला एना टॉल ड्वार्फ खाली से भाबितिले बा कलर्ड एंड व्हाइट फ्लावर भाबितिले. किंतु बहुत उडे गछरे हमें इन बिटवीन कलर भी देखिले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा जाउतला. तेनु सेटा भी एक्सेप्टेड हो नथला. एवं से मैथमेटिक्स जो यूज करथिले सेतबे सेटा एक्सेप्टेड हो नथला. ए विषय हमें लास्ट क्लास रे कहिथिले. आज के क्लास रे कोन कहिथिले ब्लेंडिंग विषय कहिथिले ला इनकम प्रेडोमिनेंस फैक्टर. एंड इट टोटली न्यू कांसेप्ट थिला बुझिला. तो ए सब जिंस जगो से एक्सेप्टेड हे नथिले. एवं हमें आज के क्लास रे डेविएशन देखिथिले मेंडेलियन डेविएशन हला. ताले किए मेंडेलिज्म को रीडिस्कवर करथिले. ए साइंटिस्ट तीन जन का नाम लिख. वन इज फ्रॉम हिज ओन कंट्री टेस्टर मार्क. डिवेरिज जे कि म्यूटेशन ऊपर भी काम करचंती. डिवेरिज कोरेंस एंड von टेस्टर मार्क independently rediscovered Mendel
Mendel's results on the inheritance of character. This line very important. An advancement in microscopy enabled the scientists to observe cell division also. This leads to discovery of structures in the nucleus that appear to double and divide just before each cell division. तमे meiosis पढ़छ से meiosis रे जेमति क्रोमोसोम रो बिहेवियर जीन रो बिहेवियर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टर्म रे से माने कहिथिले जाको हमें क्रोमोसोमल थ्योरी of inheritance कहबा. It was not given by Dihybrid, Corens and Testermark. It was given by somebody else. तमे आगे फर्स्ट लाइन लिख लो. फर्स्ट लाइन लिखो. Second line over. Okay. Third line. कोमानी मेंडेल्स लॉज रिडिस्कवर करथिले. Hugo Dihybrid, Corens and Testermark in the year 1900 after 16 years of his death. Can any of you tell me what is the phenotype of this? Santosini, capital T, small t, capital R, small r. It is homozygous or heterozygous? It is heterozygous. Then homozygous points are rejected. Only heterozygous. And then you tell me, it will be what? Yes. Sangeeta, Mariam, Sittal, so correct. Santosini, समस्त correct. La. Pleiotropy तो हमें कोई थिले बे मन अच्छे तो multiple effects of a single gene कहते कि नहीं deviation from Mendelism खाली मने पके दोची. The specific gene controls the phenotypic characters. इटा करे थी. Single gene influence more than one phenotypic characters. पढ़ा सॉरी जी. Same gene, मुझे example अलगा दे करे. Same gene is activated in several different tissues, producing different phenotypic effects. A line टा लिखो. Pleiotropy रे same gene is activated in several different tissues, producing different phenotypic effects. This line you add. Very good, Aji. Samaste follow करछो. छुट्टी दिन ना. Done. Yes, Sangeeta. This line is over. गोटे एग्जांपल नबा जोटा तुम बही रे अछि. Cystic fibrosis भी नहीं परियो गोटे एग्जांपल. आ गोटे एग्जांपल नियो. Phenylketonuria. एग्जांपल पई हमें पढेले. There are two examples I have given. Cystic fibrosis and phenylketonuria. PKU. Phenylketonuria. The class will be continuous, Nandini. The class will be continuous. This is Smita. Ayala? Okay. Sickle cell anemia also. Okay. Another example is sickle cell also.
तीनटा एग्जांपल्स तो लेंगे बुझेबी संतोष नहीं एबे बुझेबी जस्ट आई हैव रिटेन द एग्जांपल्स सेट तो बुझे तो करछि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड pleiotropy before let it be sickle cell anemia ला एथरे कोन हिच बुझ परजो हां सिकल सेल एनीमिया रे कोन हिच को हमर जो आरबीसी सेटा न्यूक्लियस नाही ना एमती थाए बाइकन के फेक किन एथे एते लंबा है ताले ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टा कोन हबो तार कमी जीवो सिकल सेल एनीमिया बहुत गुडा एग्जांपल द पॉइंट म्यूटेशन ऑफ एग्जांपल माने गोटे न्यूक्लियोटाइड चेंज हे जेतिवर न्यूक्लियोटाइड पेयर चेंज हे जेतिवर ये प्रॉब्लम टा होची इट इज आल्सो तार भी एग्जांपल है ना and it is the example of pleiotropy normal rbc dela sickle structure he jechi la oxygen carrying capacity कमी जीव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमी गले कोन गोटी इफेक्ट हबो बहुत बडे इफेक्ट बॉडी रे देखा जीवो क्लियर हेलो बॉडी रे कोन गोटी इफेक्ट देखा जीवो ऑक्सीजन जदी कमी जीवो विभिन्न जगह विभिन्न इफेक्ट देखा जीवो हला सिकल माने हाफ मून टाइप ना बुझला हाफ मून टाइप वार इफेक्ट कोन गोटे हबो कि आर इफेक्ट बहुत उडा हबो क्लियर हेलो केना ऑक्सीजन कैपेसिटी ले गोटे जार इफेक्ट देखम डिफरेंट इशू देखम एबे आसो फिनाइल अलानाइन एटा बेसी इंपोर्टेंट इन ए पर्सन विदाउट PKU एठी गोटे एंजाइम्स अछि फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज से कोन करे ना फिनाइल अलानाइन को उतरे कन्वर्ट करे टायरोसिन ने कन्वर्ट करे हैला तुम जानछो डिफरेंट अमीनो एसिड यू नो डिफरेंट अमीनो एसिड जानछो कि नहीं ट्रिप्टोफैन थ्रियोनाइन टायरोसिन ओके तो इथरे एटा कन्वर्ट करे किन जदि एटा नथांता तल टायरोसिन बनि करियो कि बनि करिवनि ला तले नेक्स्ट पॉइंट देखो इन ए पर्सन with PKU phenylalanine phenyl माने एटा नाही हैला अरे एटा अछि और एटा नाही ना एटी उल्टी जाई छै तो सेठी कोन हबो एटी बनिलानी नो फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज तले कोन हबो फिनाइल अलानाइन टॉक्सिक लेवल रे आसी जीवो फिनाइल पाइरुवेट ही जीवो हैला आते देखो जति फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं ताहले ये जो फिनाइल अलानाइन जोड़ा अछि जोड़ा फिनाइल पाइरुवेट ही जो जोड़ा टॉक्सिक लेवल है केना ओडा हाइड्रोक्सिलेज होउनी क्लियर हैला हाइड्रोक्सिलेज होउनी संगीता बुझियला तले सेटा कोन हि जीवो हम बॉडी रे टॉक्सिक लेवल ले डिपॉजिट हबो एटा बनुनी थी दैट इज द कांसेप्ट तले गोटे डिजीज गोटे कैरेक्टर देखियो ना बहुत प्रकार कैरेक्टर बहुत प्रकार इफेक्ट देखियो ना गोटे एंजाइम गोटे जिन गोटे एंजाइम्स बनेलानी किन तार इफेक्ट अनेक हला ना ए देखो केन देखाउ चंदी सने फिनाइल कीटोनुरिया हबो तंगु कोन हबो फिनाइल कीटोनुरिया हबो इ टाइप रो बॉडी हि जीवो फिनाइल कीटोनुरिया हबो स्टंटिंग ग्रोथ हबो कलर केमती हि जो देखो से फिनाइल अलानाइन को ब्रेक डाउन करि परिवनी है ना एटा मध्ये ओटे ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है ना जेनेटिक डिजीज एंड ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज मो फास्ट कोन कहि दिल तुमको जे फिनाइल अलानाइन
आउथन देखे दउछ तुमको फिनाइल अलानाइन कोन हबो भांगिया कथा फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज द्वारा टाइरोसिन हुए सर किंतु स्लाइड टा हम बुझे जानतो हां एटा देखा होस त बे आज्ञा सर फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज थिले टाइरोसिन हेइतांता हला वर्तमान एटा गोटे ऑटोजोमल रिसेसिव इफेक्ट हैला जा द्वारा कि फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज फॉर्म हेलानी ताले कोन हो फिनाइल अलानाइन डिपॉजिट हबो कैना टाइरोसिन होउनी हैला ए जो डिपॉजिट हेले एटा टॉक्सिक हे जिवो बॉडी पाइन फिनाइल अलानाइन मेटाबॉलिज्म होउनी बुझेला एवं जदि भी डिपॉजिट हबो फिनाइल पायरुवेट आडू कन्वर्ट हबो डिपॉजिट हे जा फल रे कि कंटेंट ग्रोथ हबो हैला फिनाइल कीटोनुरिया तक कहंती हैला फिनाइल कीटोनुरिया हबो सेटा गोटे टिश्यू रे इफेक्ट देखिबोनी बहुत जगह इफेक्ट देखिबो हैला इट्स अ डिफॉर्म बॉडी हे जे देखो तार स्टोमक प्रॉब्लम हबो लिवर प्रॉब्लम हबो बॉडी डिफॉर्म दे जिवो हैला तले गोटे सिम्पटम्स हैला ना अनेक सिम्पटम्स हैला तो अनेक इज इट अनेक सिम्पटम्स तने गोटे जीन गोटे एंजाइम्स बनै परलानी किंतु इफेक्ट्स आर मेनी तो फिनाइल कीटोनुरिया इज आल्सो नोन एज पीटीओ तार नाटा खाली तार इफेक्ट अलगा यदि गोटे ब्रॉडर कांसेप्ट पचरा जिवो व्हाट इज फिनाइल कीटोनुरिया it is a rare condition in which a baby is born and does not have the ability to break down the amino acid ta na kono phenylalanine कोथरे कन्वर्ट होबा गता टाइरोसिन ने कन्वर्ट होबा गता किंतु हे परिवनी एवं एटा गोटे जेनेटिक डिफेक्ट बट रिसेसिव ट्रेट्स हला एटा गोटे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स किंतु एटा प्लियोट्रोपिक मतलब गोटे जीन मेनी इफेक्ट्स हला या कहि हमें आ एति कि तम बहिरे अछि कि जे तम चाहिबो आउरी अधिका पॉइंट्स मु कहि परिबे हला तो PKU does not really affect you you can live as long as any other person who does not have it किंतु एथिरे तमरो मेटाबॉलिज्म गुडा टिके इफेक्ट करिवो हला बुझबाच कि नहीं आज्ञा एटा सर फिनाइलअलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जोटा सेटा बनुनी हला से विषय से किंतु स्टंटेड ग्रोथ हबो डिफेक्ट हबो लिवर प्रॉब्लम भी बाहरिवो ला किडनी प्रॉब्लम बाहरिवो इन जने बंची जाई पारे रिसेसिव जेतु बंची जाई पारे PAH रो फुल फॉर्म कोन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAH फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज तले एटा कहार डिफेक्ट ना एटा जे बनाए से जीन रो डिफेक्ट तो PAH रो फुल फॉर्म यू राइट फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एटा को क्रोमोसोम रे अछि कैन यू सी इट इज प्रेजेंट इन व्हिच क्रोमोसोम राइट डाउन क्रोमोसोम नंबर 12 ब्लड ग्रुप संगीता को क्रोमोसोम रे अछि ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्रोमोसोम नंबर 9 ना मु कहूची बट ब्लड ग्रुप केते क्रोमोसोम नंबर लिखि दियो क्रोमोसोम नंबर 9 एंड फिनाइल कीटोनुरिया the defect हबो तले तारो को क्रोमोसोम रो डिफेक्ट को क्रोमोसोम नंबर अरे कोना किछि कहीं क्रोमोसोम नंबर 12 क्लियर हेलो क्रोमोसोम नंबर 12 मु कहूची ता डिटेल्स कहिबी एटा के को क्रोमोसोम रो जीन रो डिफेक्ट हेले क्रोमोसोम नंबर 12 रो जीन ता जे डिफेक्ट हो से जीन 5 PAH बनै परिबो नाही ताले म तुमको टिके डिटेल्स कथा होची you just write down but I'll tell you so many points phenyl ketonuria got a inborn error in metabolism correct it lead to mental disorder ठीक है स्लो ही जो लोकटा ग्रास्पिंग पावर कमी जीवो पाठ पढिबार कैपेसिटी बा बुझिबार कैपेसिटी कमी जीवो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कमी जीवो ना
तार स्किन कलर लाइटर हे जबो ना डार्कर हे जबो लाइटर स्किन कलर हबो संगीता बुझेला बैड स्मेल स्किन रस करे Yes, sir. बॉडी वेट कमी जबो ना बढ़ी जबो बॉडी वेट कमी जबो हैला Yes, sir. जने बंची जाई पारे एनाटा रिसेसिव जेहेतु हैला एथिरे जनरली प्रॉपर्ली सिम्पटम्स देखा जायनी कि जदि एटा इफ पार्टल एटा जदि देखा गला रिसेसिव कंडीशन रे ताहले एही प्रॉब्लम देखा जिवो इट शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली ब्लड टेस्ट करले जानी हबो बुझेला जदि हमर 12000 बेबी थांती मात्र गोटे पिला को एटा हेई पारे बुझ पालो आरो ट्रीटमेंट अछि कि नहीं आरो ट्रीटमेंट नहीं बुझ पालो ब्लड टेस्ट करले जानी हबो इन ट्रीटमेंट नहीं जनरली पिलाटा जन्म हला माने आरो ट्रीटमेंट करिले पिला किछि कैंसर रे ठीक ठाक हे जो अगर सेमिति गोटे क्लियर कट सिम्पटम्स नहीं किंतु फिनाइल कीटोनुरिया गोटे डेंजरस डिजीज हला ताको टिके प्रोटीन सप्लीमेंट दबा उचित हो फल खाइबो दबा उचित हो एति की संगीता चलिबो ना आउ पढेबी नहीं सर ठीक अच्छे तो एक तरह बॉडी रे किछि जगह रे ऑर्गन हम स्टंटेड ग्रोथ इज वन सच केस हला केतडा देइछि म किछिटा सिम्पटम्स पीकेयू टेस्ट भी करी हबो तबे मते को sickle cell anemia is the example of out of these three कोटा हबो mutation color blindness pleiotrophie कोटा हबो out of these three can any of you tell me Santosini good pleiotrophie okay Sangeeta एबे हमें जिबा मल्टीपल एलेलिज्म कहिथिल तुमको ब्लड ग्रुप पहले कहि नथिली ह्यूमन ब्लड ग्रुप गोटे जीन रो केतेटा एलेलिज थाए डीटा जदि मल्टीपल एलेलिज्म थिबो ताले म्यूटेशन हेले वन एलेलिज थिबो ना मोर देन वन एलेलिज थिबो तीनटा हि जिवो हला गोटे जीन रो दीटा एलेलिज थाए किंतु एथरे कोन हे जिवो तीनटा हे जिवो जेंति कि IA इज इक्वल टू IB ग्रेटर देन I0 लिखि पारो बा स्मॉल I लिखि पारो तले केतेटा हला IA IB एंड स्मॉल I तीनटा हला कि नहीं जदि तीनिटार दीटा पोजीशन अछि तले केतेटा कॉम्बिनेशन पॉसिबल 3 into 2 6 combination possible तले ह्यूमन ब्लड ग्रुप रो हाउ मेनी genotypes तार फार्मूला हमें लिखिबा बे रसल्ला फार्मूला लिखो जदि मल्टीपल एलेलिज्म देखेबो तले फार्मूला कोन होबो मोर देन 2 हेले हमें ताको कहबा मल्टीपल एलेलिज्म तार फार्मूला लिखो n into n plus 1 by 2 is the genotypes एतिकटा genotypes देखा जिवो एठी केतेटा एलेलिज 3 plus 1 is 4 by 2 therefore it is 6 so how many genotypes possible 6 because n is number of alleles that is 3
Sometimes a gene may have more than 2 alleles. Let it be 3. Formula मिलला आगु जाउची. Yes, Krishna. ताले मते एबे ब्लड ग्रुप रो alleles गुडा कहबो. One gene more than 2 alleles, multiple allelism. ना एबे ब्लड ग्रुप रो फॉर्मूला गुडा कहबो. ना मु लिखुची. आमे केवल चारिटा ब्लड आमे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव करिबानी. आमे केवल चारिटा फेनोटाइप्स नेले. ओ ए बी ए बी एटा हला फेनोटाइप्स. जेनोटाइप्स केतेटा हबो? स्मॉल आई आर गोटे आर हबो आई ए नले कोन हबो आई ए स्मॉल आई बी होमोजाइगस नले कोन हबो आई बी स्मॉल आई एंड ए आई बी. ले टोटल केतेटा हला 1 2 2 1 केतेटा जेनोटाइप्स हला पिलाने को केतेटा फेनोटाइप्स एंड केतेटा जेनोटाइप्स हला 6टा जेनोटाइप्स हला. केतेटा फेनोटाइप्स हला 4टा फेनोटाइप्स हला. क्लियर आगु जाउची कथा हो ना एटा करी सर. संहिता हला Yes, sir. मल्टीपल एलिमेंट्स तो हमें कोई दिले. बर्तमान हमें नेक्स्ट पार्ट को लिया. मल्टीपल एलिमेंट्स एपीओ ब्लड ग्रुप खाली हमें कहले ना. हाउ मेनी एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स. ब्लड ग्रुप केते नंबर क्रोमोसोम रे अछि? क्रोमोसोम नंबर 9. ना क्रोमोसोम नंबर 9. क्रोमोसोम नंबर 9 लिखो. हाउ मेनी जेनोटाइप्स 6. क्रोमोसोम नंबर 9 लिखो. आगु जाउची क्रोमोसोम नंबर 9 खाली आगे देखन. What are the phenotypes? এবং কিଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ? ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର. ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର. ଆଗକୁ ଯିବା. ହ୍ୟୁମାନ ଏବିଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ was proposed ବା discovered by Carl Landsteiner. ଆଗକୁ ଯାଉଛି. ଫଟୋ ଦେଖିଲ? କେତେଟା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଆମେ କହିଲେ? ହାଉ मेनी ଫେନୋଟାଇପ୍ସ? 4ଟା. ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ एंड absence of antigens on the plasma membrane. କୋଉ antigen ଅଛି? ए रे ए थिबो, बी रे बी थिबो, ए बी रे दिटा अंग थिबो, ओ रे किछ नथिबो. हला प्रेजेंस और absence of antigen. ए रे कोटा थिबो ए एंटीजन, बी रे कोटा थिबो बी एंटीजन, ए बी रे दिटा. तामने ब्लड ग्रुप आ गोटे कोन लिखैती. ब्लड ग्रुप is the example of dominance, codominance
and multiple allelism. आपको केमिति बुझेगा IA is equal to IB. That is codominance. Greater than small I is dominance. Dita achi na tinta achi. Tinta achi. So multiple allelism. Clear hello? It is the example of dash dash dash. Clear hello? Okay. Yes. Very good. Now we will enter into next part. Blood group को हमें आज calculate करिवा. किए करी पड़ची देखिया. Antigens A and B consist of carbohydrates groups. So मने अछि तमरो glycolipid and glycoprotein plasma membrane थाए. The carbohydrate parts टा ही तारो responsible for this. Carbohydrate groups and lipid molecules which is present in the membrane. Sugar polymer थाए ना oligosaccharides. Sialic acid थाए ना fatty acid थाए. तापरे माने डिपेंड करंती. तो ये लाइन टा आउथरे रिपीट करो. Carbohydrates part. Sugar polymer. जोटा लेखा इची पूरा लेखो. संतोष सिंह रथा, are you writing? हमारा histocompatibility गोटे लाइन जतोळे आमे पढंती आमे जतोळे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढंती ततबेले आमे histocompatibility बोली गोटे वर्ड पढंती ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढिଛ त तले ग्लाइको पार्ट ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन ये जो पार्ट तुम पढिଛ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स को वर्ड को छी ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट्स carbohydrates बाहर अडको छी ना भीतर अडको छी reported towards outer side or towards inner side towards outer side of the membrane suppose eta plasma membrane inti thibo carbohydrates part ta कोट thibo carbohydrates part ta bahar अडको था inti la that is responsible for histocompatibility. This part is responsible for compatibility. Histocompatibility. Then carbohydrate part is important. Antigen antibody interaction time. है ना? बुझेला? ये part टा लिखो. आगु जीबी? Carbohydrates part लिखो. कोवर्ड को छी डे पार्ट टूडा बाहर अड को छी भीतर अड को नहीं एडला फॉस्फोलिपिड जोटा ओके मरियम लिखी सर आई एम वेटिंग जे कौन सी एंटीजन बॉडी भीतर गले ता अगेंस्ट गोटे एंटीबॉडी फॉर्म हुए ना एंटीजन गले एंटीबॉडी ता अगेंस्ट फॉर्म हुए ना ओके जदि फॉरेन ही थी ताले फॉर्म हो नेचुरल फॉर्म हो बनी ना जाफरे की तांकर रिजेक्शन बा एक्सेप्टेंस है एग्लूटिनेशन तक कहंती ना एटा तमरो सर्कुलेटरी सिस्टम रे भी पढ़ा जाए ना क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स ना एग्लूटिनेशन माने कोन क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स जदि तार मैचिंग हितिबो ताले क्लम्पिंग हबनी यदि मैचिंग न हितिबो ताले क्लम्पिंग हबो क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स एला जेमिति की सपोज हमें नबा ओ सपोज हमें ओ नबा इनकम्पैटिबिलिटी हेले जाई हबो कंपैटिबिलिटी हबनी सपोज हमें नबा ओ कहा को नहीं परिवो ओ को नहीं परिवो सपोज हमें नबा ए
ए को नहीं परिवो एंड ओ को भी नहीं परिवो कहीं ना ओ रो किछि एंटीजन नाही सपोज हम नबा बी बी को नहीं परिवो एंड ओ को भी नहीं परिवो कहीं ना तार ओ रो किछि एंटीजन नाही सपोज हम नबा ए बी ए एस परिवो एना ए अछि बी एस परिवो ओ एस परिवो एंड ए बी एस परिवो ना बट सपोज हमें ओ नहीं जे खाली ओ ही एस परिवो तो माने हु इज द यूनिवर्सल डोनर who is the universal donor can any of you tell me who is the universal donor who is the universal donor O and who is the universal recipient AB can A asile भी नहीं परियो can A antigen दा बारे अच्छी B आइले भी नहीं परियो AB रे AB आइले तो आउरी बढ़िया जानी ची दी जनों को किंतु O asile भी नहीं परियो है किंतु O पाखु को माने जाई परियो ओके ओ पाखु को माने जाई परियो हाँ गुड संतोष नहीं ओ पाखु केवल ओ जीवो है ना एटी ओ नेगेटिव इज बेटर आंसर केना नेगेटिव रो भी एंटीजन नहीं ना नेगेटिव रो भी एंटीजन नहीं तनो ओ रो भी नहीं ओ नेगेटिव तनो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल बट एठी हमें सेटा पढौनी हमें एठी पढौ जे हमें एठी पढौतले क्रोमोसोम 9 एंड जीन आई विषय पढौतले ना gene I located on chromosome 9 which is responsible for a view of blood groups. है later it was discovered by Bernstein. So actually proposal was given by Lanston discovered. तेणु आमे खाली genetic aspect टा पढ़ौचे आगो जाऊ जी chromosome number 9 रे अछि बेली कहितली clear yes sir. One gene, 3 alleles, and what are they? One gene, 3 alleles, and what are they? IA, IB, I0, বা small I. Multiple alleles କହିଥିଲେ. Second एटा पढ़ेले clumping ବିଷୟରେ ପଢେଇଲେ A B ଥିଲେ କଣ ହବ production of antigen A B ଥିବ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଢେଇଲେ small I ଥିଲେ କିଛି ବି antigen ନଥିବ ଯୋଉଟା କି blood group O ରେ କହିଥିଲେ ନା very good संगीता blood group रे no antigens जदि IA and IB दिटा अंक थिबो ताले हम ताको co-dominant कहबा किंतु small I ऊपर dominant थांती ସେମାନେ AB blood group अछि ना तेणु it is represented by like this already I told तेणु आमे केतेटा possibility of genotypes कहितले छटा आ केतेटा possible of phenotype कहितले चारिटा सरी सलिनी पढै सलेनी ना ता पर पार्ट को जिबी एबे तार गोटे प्रॉब्लम दबा हैला गोटे प्रॉब्लम दबा ए सहित ओ रो मैरिज हला हैला समझ बुझ पाछो धर ए सहित बी रो मैरिज हला नले करो आगो पिला मानकर ब्लड ग्रुप कोन होबो गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 लिखो ए सहित गोटे पुओ रो गोटे झियो रो मैरिज हला ए ब्लड ग्रुप पुओ रो बी ब्लड ग्रुप झियो सहित पिला मानकर ब्लड ग्रुप कोन होबो करिबा ओके आमे एई साइड रे प्रथमे लिखिबा से मेल रो ब्लड कोन हिथै पारे IA हे पारे नले IA स्मॉल I हे पारे IB हे पारे नहले IB स्मॉल I हे पारे तले गैमेट कोन हबो IA हे परिबो नले स्मॉल I हे परिबो IB हे परिबो नले स्मॉल I आउट प्रोबेबिलिटी किछि नाही करेक्ट तले जदी एटा सहित
एटार यूनियन हम ताले एटा AB ब्लड ग्रुप हम जदि एटा सहित एटार यूनियन हम ताले A ब्लड ग्रुप हम जदि एटा सहित आर यूनियन हम ताले कोन हम B ब्लड ग्रुप हम and एटा सहित एटार यूनियन हेले O ब्लड ग्रुप हम ताले सब ब्लड ग्रुप पॉसिबल कि न देखि को सब ब्लड ग्रुप पॉसिबल कि न संतोषिनी ओ भी हे परिबो कि नहीं यस ओ भी हे परिबो समस्या करो शीतल हला शशि डन संगीता मरियम विरजा Yes, sir. ओके नाउ आउ गोटे प्रॉब्लम दबा धारो ओ सहित एबी रो मैरिज हबो ओ हला कोन मेल एंड एबी हला सपोज फीमेल ओ रो जीनोटाइप कोन आई आर जीनोटाइप कोन IA IB ले गैमेट कोन फॉर्म हबो केवल गोटाए ही परियो गोटे टाइप रो स्मॉल आई ही परियो आ किसी ही परियो आर कोन हबो IA नाले IB आ तो किसी ही परियो ना जदि ए दीटा मिसी गला तले कोन हबो A ए दीटा मिसी गले कोन हबो B तले कोन ब्लड ग्रुप सब हबो को प्लान में मरियम शीतल ब्लड ग्रुप कोन हबो जदि O and AB रो मैरिज होची O ही परिबो की ना ला O ही परिबो की ना No, sir. B ही परिबो हां A ही परिबो हां AB ही परिबो की ना तले A ही परिबो नाले B ही परिबो आ किछि ही परिबो ना एला कर सलनी ओके Yes, sir. now you go for another suppose O सहित A रो मैरिज हबो कोन हबो कहबो मते O सहित O रो मैरिज ले कोन हबो कहबो O सहित B रो मैरिज ले कोन हबो कहबो ला O सहित A रो मैरिज ले कोन हबो को any of you O सहित A रो मैरिज हबो मार कर दोची O रो कोन हबो स्मॉल आई आर कोन हबो IA नले IA स्मॉल आई आर यूनिट कोन स्मॉल आई आर कोन गैमेट ही परियो प्रोबेबिलिटी रे IA हे परियो नले स्मॉल आई हे परियो ताले कोन हला एटा A ब्लड ग्रुप हबो नै दिटा मिसेले कोन हबो O ब्लड ग्रुप A और O हला आ किस तो ही परियोनी देखो O सहित A रो मैरिज ले O ही परे नले A ही परे O सहित O रो मैरिज ले कोन हबो आई अछि ले कोन हबो आई केवल ही परियो तणटा O ही परियो क्लियर हेलो एना एटा कोन आस परियो आई क्लियर हेला समझते हाँ फर्स्ट O और A हबो करेक्ट संगीता सेकंड टा खाली O हबो एटा करिया आई एपटे IB बा IB स्मॉल आई हबो तले एपटा कोन हबो के कोइ परियो थर्ड टा वेरी गुड सेकंड टा खाली O थर्ड टा हाँ संगीता ठीक अछि सेकंड टा कोन हबो थर्ड टा को either I केवल एपटो आसुची एपटो IB आसुची नाले स्मॉल आई आसुची ए दिटा मिसी गले हबो B ए दिटा मिसी गले O B और O ना B और O सम्या छाटा O और B का B और O बुझी पड़ला समझते I hope it is interesting समझते बुझी पड़ला ओ genotypes of ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଛେ boy girl ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଛେ genotypes XY XX
genotypes हिसाब रे करछे एटा IAIB I एंती जदी हबो एटा हमें पूरा निकी करछे या हबो ला ब्लड ग्रुप रो एटा सेटा एटा ले कोन हबो सेटा एटा सब A B जो छटा genotypes जो नैथिले तापरे करथिले कि हमें गोटी के निकी भी करले सेटा भी बुझ परला ला कोडोमिनेंस रो भी एग्जांपल मल्टीपल एलिलिज्म रो एग्जांपल कंप्लीट डोमिनेंस रो भी एग्जांपल या करछे ह्यूमन ब्लड ग्रुप ला क्लियर हैला सारी दी चेता IA एंड IB दिटांग थिबारो एटा कोडोमिनेंस रो भी एग्जांपल एवं से माने कैपिटल I बा स्मॉल I ऊपर डोमिनेंट थिबारो ला एटा सेही जिंसटा खाली दस्तक देखौछ तुमको एया जेनोटाइप्स ही करियो एटा फेनोटाइप्स है छटा जेनोटाइप्स चारिटा फेनोटाइप्स ही ला एबे आसो सब इंपोर्टेंट पार्ट एथर आसीतला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ला ऑल ऑफ यू हैव पेशेंस को सुनुछ त समझते तो we have the next part that is very important that is called polygenic inheritance first line पिलाने को हो is it deviation from Mendelism na no is it deviation from Mendelism na no it is the deviation from Mendelism कहीं की ना Mendelism हैला मोनोजेनिक किंतु एटा पॉलीजेनिक तो एटा आसीतिला NEET 2025 रो क्वेश्चन polygenic is a non-Mendelian inheritance okay deviation from Mendelism ता माने कोन कहबा non Mendelian inheritance I first class रे कहितले बियाकू it is a blending inheritance is it a blending inheritance yes खाली parental character no in between character मध्ये देखा जाए एटा blending and two or more genes one gene one character is monogenic if it two or more genes achi for a single phenotypic expression हैला और तला को क्वांटिटेटिव कहबा ना क्वालिटेटिव कहबा क्यूमुलेटिव माने मिसी जाए संतोष ने बुझेला क्यूमुलेटिव माने मिसी जाए Quantitative. हां माने गोटे जीन रेस्पोंसिबल नो जदि तीनटा जीन रेस्पोंसिबल हेले तले मिसी गला कि नहीं तीनटा जीन रो इफेक्ट Yes, sir. एना को हमें क्यूमुलेटिव कहबा इट इज आल्सो ब्लेंडिंग एना ओनली parental character न थाए in between character intermediate characters develop हुए एवं प्रत्येक जीन कंट्रीब्यूट करंती इक्वली तो ना को क्वांटिटेटिव वेरिएशन कह परिया कि नहीं कह परिया and is it continuous variation or not केना आस्ते आस्ते कैरेक्टर ता चेंज होची ट्रेट्स ता चेंज होची जेमिति कि ह्यूमन स्किन कलर कोन खाली ब्लैक एंड व्हाइट अछंती कि different intermediate characters are there therefore it is also called quantitative variation also continuous variation also किंतु जत्ते बेले में p plant रो height नबा will get either tall or dwarf ताहले हमरो p plant रो character monogenic qualitative quantitative no ho but here it is quantitative blending continuous variation तले आज का टाइम रो हमें सब बेले जानि परिबा कोटा मोनोजेनिक कोटा पॉलीजेनिक जोठी केवल दीटा ट्रेट्स थिबो एवं दीटा लंक बा तीनटा ट्रेट्स थिबो ताले सेटा को हमें कहि परिबा जदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेतु तीनटा ट्रेट्स थिबो नले दीटा ट्रेट्स थिबो सेटा को हमें मोनोजेनिक कहबा किंतु जत्ते बेले पॉलीजेनिक हबो there are so many traits in between traits and parental traits are rare intermediate traits are more so can I say it is continuous variation discontinuous or continuous
कंटिन्यूअस आस्ते आस्ते चेंज होची तेणु एटा कंटिन्यूअस 10:30 रे सरियो क्लास हला आ 30 मिनिट्स मोर एना हम कंटिन्यूअस क्लास करते आगु जिबा Yes, sir. now the point is human skin color near how many genes are responsible human skin color polygenic रे 2 or more genes pleiotropy रे 1 gene many character ए दीटा को deviation from Mendelism ए सेटा देखोथिली हला एवं human skin color पई केतेटा gene responsible 3 देखो 3 genes are responsible das pigment ऊपर तो depend करछ एंड pigment ना कोन melanin and how many genes are responsible 3 genes 3 genes clear hello how many genes are responsible 3 genes हला देखो ठीक है 3 genes human skin color different and which pigment melanin तुम कह सर आउ टिके हमें समान कलर थिलो किंतु कलर बेले बेले टिके टिके चेंज होचे टैनिंग सूर्य किरण रे टिके टिके प्रॉब्लम हेई पारे जदि 3 जीन तले टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स केतटा हबो 2n plus 1 hobo where n is the number of genes correct tale human skin color ketata hobo 2 into 3 plus 1 ketata hela 7 types tanning hele auri adhika hochi surya kiran tanning हुए तले हमरो human skin color हिसाब रे how many are there how many races are there 7 races are there you write the formula 2n plus 1 ये formula टा लिखो 2n plus 1 समझते लिख लो लिखो 2n plus 1 संतोष नहीं आगु जीवा No, sir. लेक्चर Again, repeat, sir. रिपीट करबी तो Yes, sir. केतेटा जीन ह्यूमन स्किन कलर ପାଇଁ ଦରକାର ତିନିଟା Again, sir. ତାଲେ 2 into 3 केते 6 Sir. plus 1 केते ହେଲା 7. 7 ତାଲେ केतेटा ह्यूमन रेसेस अछन बेस्ड ऑन कलर 7 type. 7 किंतु बेडे पे देखियो हमें जेमतिया थिले जो कलर हरारे बुली बुली टिके कळा ही जानदेनी Again, sir. दैट इज टैनिंग माने सूर्य किरण टिके टिके अलगा कलर ही जानती किंतु एक्चुअली हमें पाखापाखि केते जनक कलर पाखापाखि थाए मात्र 7टा रेसेस अछि एंटायर ह्यूमन बीइंग रे हला क्लियर हैला तो Again, sir. ओके फॉर्मूला तो बते देली आ एंती सब थांती एंती बहुत कलर लागुची किंतु एक्चुअली 7टा रेसेस इन सब टिके टिके अलग अलग लागुची किंतु टाइप्स कहले 7टा टाइप्स पूरा ब्लैक पूरा व्हाइट इन बिटवीन एंथर एटा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कौन को आइतिला क्वांटिटेटिव ना क्वालिटेटिव Quantitative. very good and it is continuous variation na discontinuous variation Continuous. very good and it is blending or not can a in between character achi the blending inheritance or not Learning. yes blending it is also blending very good एबे हम जिबा नेक्स्ट पार्ट को ना एटा सरला
को पिगमेंट ऊपर डिपेंड करे मेलानिन कहितली केतटा जीन नबा तीनटा एबीसी तीनटा जीन नेली ना स्किन कलर इन ह्यूमंस को पिगमेंट ना कोन मेलानिन तले डोमिनेंट एलिलीज गुडा रिसेसिव वाला तमने केतेटा एलिलीज थिबे जे तीनटा जीन्स अछि तले केतेटा एलिलीज थिबे 6टा 1 2 3 4 5 6 केतेटा एलिलीज थिबे तीनटा जीन्स तो केतेटा एलिलीज थिबे गोटे जीन दुईटा एलिलीज ना तो तीनटा जीन केतेटा एलिलीज 6 एलिलीज यू पीपल आर very lucky that हमें इटा को सारी दबा दी ना संतोष नहीं हला 6 एलिलीज आगो Yes, जी sir. Yes, sir. ओके obviously coloration ପାଇଁ they are responsible जदि हमें अनि डोमिनेंट आडू जीवा डार्क कलर हबो जदि हमें रिसेसिव आडू जीवा लाइट कलर हबो क्लियर हेलो व्हाइट हेबा पहले कोन हबो रिसेसिव कैरेक्टर ब्लैक हबा पहले कोन डोमिनेंट रहइबो Delish. क्लियर हेलो एंते रहइबो न लेमते हबो सेटा पूरा ब्लैक एटा पूरा व्हाइट है ना धर मो ब्लैक रो रिप्रेजेंटेशन केमति करबी कैन एनी ऑफ यू टेल मी ब्लैक रो रिप्रेजेंटेशन मु कर दउची तम बुझियो ब्लैक रो रिप्रेजेंटेशन हैला कैपिटल ए ठीक है जी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी एंड व्हाइट रिप्रेजेंटेशन केम देबो ए बी बी सब स्मॉल हैला प्योर व्हाइट न बना प्योर ब्लैक प्योर व्हाइट न बना क्लियर है तो Yes, sir. Clear. हाँ व्यास नेक्स्ट पार्ट को एटी देला डार्क आको हमें लिखियो ब्लैक कर दियो डार्क वेरी वेरी डार्क को हमें कहबा ब्लैक ब्लैक लिख दियो और वेरी लाइट तक को व्हाइट लिख दियो एटा कोन लिखिया व्हाइट पूरा एटा तुम एते लिखनी तुम खाली लिखो ब्लैक एंड एटा को लिखि दियो व्हाइट एटा ब्लैक हैला एटा कोइ दिली बे एटा कोन पूरा ब्लैक सरला एबे हमें जिबा क्रॉसिंग करिया जदि इन गोटे बड़ गोटे छोट गोटे बड़ F1 जेनेरेशन ताले से माने ब्लैक हेबे ना इंटरमीडिएट हेबे जदि एई टाइप रो हबो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल F1 जेनेरेशन धरो एटा कोन हेबे ब्लैक हेबे ना व्हाइट हेबे ना इंटरमीडिएट हेबे एटा लेखो इंटरमीडिएट Intermediate. वेरी गुड दैट इज इंटरमीडिएट आगु जाउची और इंटरमीडिएट हे गेला तले जेनोटाइप्स बुझी गेला एटा इंटरमीडिएट तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनोटाइप ए तीनटा का जेनोटाइप्स इंटरमीडिएट हबो ना इंटरमीडिएट हबोनी कहले देखिया जेमितिया हो इंटरमीडिएट हबो ना हबोनी लाने को एथिरे केतेटा ऑफ अछि अपर केस 1 2 3 एथिरे अपर केस केतेटा अछि 1 2 3 एथिरे अपर केस अलगा ही जाइछि ना धर एटा मोटा कर दोछि स्मॉल सी ताले भी समान हबो एठी अपर केस केतेटा तीनटा
बुझिपारे एटा टिके चेंज करो स्मॉल सी करो हला ले तीनटा जांक गोटे टाइप रो दबो कि नहीं एटी केतेटा अप अछि 3 अप केतेटा अप अछि 3 अप एटी केतेटा अपर केस माने ना कैपिटल लेटर 3 अप एटा भी 3 अप एटा स्मॉल कर दियो ए सेटा को स्मॉल कर दियो दीटा को એટલે એ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବେ and that is intermediate संतोषिनी ହେଲା that is intermediate ठीक है concentrate कर এটা बहुत interesting part and this is also deviation from Mendelism ହେଲା good okay संतोषिनी now we'll enter into the crossing the dominant eta recessive am एंती करले eta intermediate बतन दीटा intermediate को crossing कराला ला एटार ना दे दियो F1 generation एटार ना दे दो F1 generation एटार ना देले हमें F1 generation एना एटा intermediate एटा intermediate दीटा का intermediate parental generation जोटा P सेटा में नीतिले AA BB CC cross with small b तो पूरा black and पूरा white रो crossing रे हमें इटा पाइते तापर हमें selfing करछेती ना ताले ई ग्राफ रे देखो जे इंटरमीडिएट बहुत अधिक आई जाउछन्ते ला जनरली हमर F2 जनरेशन रे पेरेंटल अधिक थांती किंतु एठी देखो पेरेंटल बहुत कम इंटरमीडिएट बहुत अधिक बुझेला इंडिया रे देखि जो इंटरमीडिएट अधिक है कि नो कने इंटरमीडिएट रो क्रॉसिंग रे इंटरमीडिएट हेची बहुत समय रेयरली गोटे ब्लैक करे भी व्हाइट हेई पारे इंटरमीडिएट रो घरे भी गोटे व्हाइट हेई पारे बा गोटे पूरा ब्लैक हेई पारे किंतु यूजुअली इंटरमीडिएट इज मोर क्लियर है लो यूजुअली इंटरमीडिएट इज मोर ए जाय हला आगु जाउची एठी लेखो F2 जनरेशन ने भी इंटरमीडिएट्स मोर फिर मतलब पढ़ी भी आउट के तार रेशियोटा भी कहबी इंटरमीडिएट्स आर मोर क्रॉसिंग हैला हु आर मोर इंटरमीडिएट्स आर मोर एबे आसो सेटा F2 एटा P नले एटा F1 ही जाउची किन एटा में F2 F1 एंड F2 करिया एवं केतेटा जेनोटाइप्स मिलिबो से विषय रे कथा हबा ना बताउछ तुमको केमिति हबो 7 स्किन कलर ऑलरेडी यू नो कि केमिति हबो केमिति हमें करबा ता विषय रे मु कथा हबी वर्तमान लेख समझते the ratio is 1 intermediate la 20 15 15 6 1 6 1 the total 64 हैला देखला F2 रे 15 plus 6 केते हैला 22 22 20 तले केते हैला F2 जनरेशन रेशियो ए हैला मतलब एटा लेख प्योर व्हाइट एटा लेख प्योर ब्लैक आ एटा लेख इंटरमीडिएट and एटा लेख fairly light एटा लेख light ना and एटा लेख fairly dark and एटा लेख dark and एटा ला purely black अगर ए रेशियोटा अगर लिखलो एटा फेनोटिपिक रेशियो हमें 7टा पाइछे बट इंटरमीडिएट अधिका पाइछे तेनु ग्राफ ए भलिया हितला पडला तो ना एमटी टाइप रो हितला ए टाइप रो हितला कि नहीं ग्राफ इज लाइक दैट माने हमरो पेरेंटल कैरेक्टर सब बहुत कमी जाइतला
and F1 generation by intermediate character both अधिका थिला and in between बाकी उड़ा थिला तो समझते लेखो 1 6 15 20 15 6 1 सातटा types एवं white light fairly light intermediate fairly dark dark and black yes संतोषनी ला बर्तमान एटा केमिति हैला should I draw अगर तमे रेशियो टा लिख सरो एटा कोन लिखलो व्हाइट एटा कोन लिखलो लाइट 6 जोटा 15 टा कोन लिखलो फेयरली लाइट इंटरमीडिएट फिर कोन लिखलो फेयरली डार्क फिर 6 कोन लिखलो डार्क एंड 1 कोन लिखलो एटा टोटल टा मिसेले केते होची 64 and 64 केम देला सेटा मु पढाइबी ना should I go to next page this line over समस्या सरला रेशियो टा सरला कि F2 जनरेशन रो फेनोटाइपिक रेशियो ओवर पहले बुझिबा yes Mariam now how ई जिंस टा केमिति हला एनवायरमेंटल फैक्टर भी अच्छी ना सन रो इफेक्ट अच्छी नहीं ह्यूमिडिटी रो इफेक्ट अच्छी टिके टैनिंग हुए किंतु केमिति हला जदि किछि न हबो ताले सातटा रहइबो ले हाउ केमिति हबो ताले हमें कोन करिबा ना एटा को एमती पढिबा लेखो पेरेंटल कोन थिला वो ए बी बी सी सी अना कोन ब्लैक क्रॉस का से तेला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सबुडा स्मॉल अना कोन तो व्हाइट गैमेट्स कोन बनिला ए बी सी आरो गैमेट्स कोन बनला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी F1 कोन बनिला को पिला माने F1 कोन बनिला एटा तो पेरेंटल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी एटा ला F1 कोन हला इंटरमीडिएट हला बनाओ F1 कोन हला इंटरमीडिएट कलर हला केना तीनटा ऑफ थिले इंटरमीडिएट कलर हला ताले एठी फेर गैमेट बनिबो हमने मियोसिस हबो एटा सब मियोसिस रो गैमेट बनिथिला मियोसिस रे गैमेट बनिथिला गैमेट मेसी की फ्यूज हितला आपन फार्मूला कोन थिला टू द पावर n हला हेटेरोजाइगस कंडीशन ताले केतेटा गैमेट बनिबो टू द पावर 3 इज 8 टाइप्स रो बनिबो केतेटा गैमेट्स बनिबो 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्लियर हलो ताले 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स केमिति बना जाय एटी सिखौची कैपिटल ए स्मॉल ए अरे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी अरे कैपिटल बी स्मॉल बी अरे कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी ए टाइप रो 8 बनिबो ताले आपको देखि बने परिबो एटा तो बने दिली आगो तापर आपको देखि कि गैमेट्स टा बनी परिबो देखि करो कोन कोन हबो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी ठीक है जी तापर कोन बनिबो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तापर कोन हबो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इट अछि तापर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी तापर कोन हबो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ताले केते टाइप रो गैमेट बनिला 8 टाइप्स केते टाइप रो गैमेट बनिला ते फार्मूला बतई छी ना कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दबो कैपिटल बी स्मॉल बी लिख दबो कैपिटल सी स्मॉल सी लिख दबो हला तापरे एटा को बनेबो एटा कैपिटल सी स्मॉल सी एंड बनेबो ताले सेटमेंट 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स पाई परिबो क्लियर हला केमिति 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनिला मरियम क्लियर हला संतोषिनी संगीता केमिति 8 टाइप्स रो बनिला हला तो प्रथमे कैपिटल ए स्मॉल ए लिखिबो तापर कैपिटल बी स्मॉल बी लिखिबो
तापरे कौन लिखियो कैपिटल सी स्मॉल सी लिखियो तापरे कौन लिखियो कैपिटल सी स्मॉल सी फिर कौन लिखियो कैपिटल सी स्मॉल सी फिर कौन लिखियो कैपिटल सी स्मॉल सी एंती लिखिले तमे एगुडा आठटा पाई परियो हला ओके शशि वेरी गुड ताले हमरो गैमेट्स बनला केनका हम सिखे देले एबे हमें कौन करिबा ना हमरो मेल केतरा थिबो मेल केतरा थिबो 8 टाइप्स फीमेल रो केतरा थिबो फीमेल रो भी 8 टाइप्स थिबो ताले 8 into 8 हमें केतरा पाइथिले 64 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स पाइथिले कि नहीं तनो हमरो फेनोटाइप्स पाइथिले ताले हमरो ए जो फेनोटाइप्स रे हमें फार्मूला कौन कहिथिले 1 तापरे कौन कहिथिले 20 रो दी साइड रे 15 15 लिखथिले तापरे हमें कौन कहिथिले 6 and 1 कहिथिले 6 and 1 कहिथिले ए टोटल टा 60 पर लागी नहीं ना 20 ला इंटरमीडिएट बाकी उडा कहिथिले फेयरली लाइट एंती कहिथिले ओके लिली बुझेला एटा एफपी जनरेशन से कहिथिले बर्तमान मते कहो जदि 6 ऑफ थिबो तले सेटा कोन हबो ब्लैक एफपी जनरेशन ने जदि all 6 are off तले ब्लैक जदि 5 ऑफ थिबो डार्क कोन कहिथिली डार्क 4 अपर केस जाइथिबो आ दीटा लोअर केस थिबो तले कोन कहबा हम कहिथिले फेयरली डार्क जदि तीनटा अपर केस रे थिबो आ तीनटा लोअर केस रे थिबो तले ताको हम कोन कहिथिले इंटरमीडिएट जदि दीटा अपर केस रे थिबो आ चारिटा लोअर केस रे थिबो तले हम ताको कोन कहिथिले फेयरली लाइट जदि 1 अपर केस रे थिबो तले कोन कहबा लाइट 0 अपर केस रे जाइथिबो सब लोअर केस रे थिबे तले हम ताको कोन कहिथिले व्हाइट तेनो ब्लैक केतेटा हमें पाइथिले 1 व्हाइट केतेटा पाइथिले 1 इंटरमीडिएट केतेटा पाइथिले 20 डार्क केतेटा पाइथिले 6 फेयरली डार्क केतेटा पाइथिले 15 टा फेयरली लाइट केतेटा पाइथिले 15 लाइट केतेटा पाइथिले 6 टा तो 1 6 15 20 15 6 1 गॉट रेशियो मिलला दिल्ली शशि संतोषिनी मरियम बुझेला ताले पेरेंटल अधिक है ना कम पेरेंटल गुडा अधिक है ना कम पेरेंटल गुडा बहुत कम ओनली 1 and 1 इंटरमीडिएट गुडा एफ जनरेशन जोडा सेउडा टिके अधिक क्लियर हेलो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ओके संतोषनी वेरी गुड इटा लिखि दियो एबे हमें खाली सेटा देखै दबा हला एबे हमें खाली सेटा देखै दबा एंड अंकर मैरिज हला तापर सब आंसर मिलिला एटा हमें खाली देखै दबा आई कलर भी गोटे बॉडी शेप भी गोटे आ अंडर रे आसीबो स्किन पिगमेंटेशन एबीसी ऊपर एटा ला पूरा ब्लैक एटा ला पूरा व्हाइट अंक भीतर मैरिज हला मैरिज ले आंसर विभिन्न कलरेशन आन पाइबा केतेटा पाइबा each gene each allele is contributes equally ना unequally समझते लिखो each gene contributes equally ना unequally equally ना each allele contributes equally ना unequally equally कहना तीनटा जोठी भी थाओ सबडा समान कंट्रीब्यूट करचंती हैला तो ई लाइन ते लिखो each gene contributes equally ओके आगु जाउची क्वेश्चन करियर अछि एनवायरमेंटल फैक्टर अछि टिके टिके अफेक्ट करिवो बट सेते अफेक्ट करेनी किंतु करे हैला टर्निंग होय ना तले एठी देखो वेरी लाइट इंटरमीडिएट हेतला एठी जदी 6 ऑफ होबो पूरा ब्लैक हे जिवो 0 ऑफ हेले व्हाइट हबो कहितले आ फेनोटाइपिक रेशियो भी कहितले एठी सेपटो ब्लैक रु व्हाइट एडु पाणी छि कि नहीं
एटी देख ब्लैक रु व्हाइट एडु आनीची हला सब ब्लैक रु व्हाइट एडु आनीची तो ई पार्ट में पढ़ेले आगु जाउची पिला माने आगु जाउची एटा पढ़ा सरीची तमने आउ F2 जनरेशन करिया दरकार नहीं 6 ऑफ 5 ऑफ 4 ऑफ जो करथिली सेइतरे बुझी जबा कथा क्लियर हेलो जीरो ऑफ माने सबडा लोअर केस ई जगहटा कोन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ई जगहटा जो पूरा ई जगहटा कोन हबो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सेटा कोन हबो तले सेटा जीरो जीरो माने सेटा व्हाइट मेलानिन फॉर्मेशन हबोनी ला अल्बिनिज्म जा कहंती मेलानिन बहुत कम फॉर्मेशन हबो आगु जिबी on किछि कोना आगु जिबी तो Yes, sir. यस मुक्ति तबे क्वेश्चन रेडी हो सम टोटल ऑफ कैरेक्टर्स हां पूरा हमें करबा बे 50 क्वेश्चंस करबा पूरा आरंभ रु sum total of characters which are transmitted from generation to generation constitute genetics mutation heredity variation फटाफट आंसर दियो anybody quick Lily Sangeeta Santosini any of you make it clear is called heredity ha Mariam Asial answer very good genetics is study of heredity and variation and this is heredity ebeko kodavo genetics is the study of dash लिखुना संगीता लेखे लक्ष्मी ऑप्शन 1 हबो heredity and variation correct or not yes Viraja it is because of dash variation is because of dash sexual reproduction or asexual reproduction हाँ सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट can any of you tell me question number 3 who will answer good yes Viraja very good सबका करेक्ट है मरियम का भी करेक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन करेक्ट मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था पूरा फास्ट से लास्ट तक होगा जल्दी मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था जल्दी लिखो ओके संतोषिनी शीतल लिली मरियम वेरी गुड आगे चले इट वाज ए इजी क्वेश्चन but you know how many pairs of contrasting traits taken Lakshmi how many pairs 14 in number but pairs कितना होगा how many yes Viraja Lily also correct
सबका करेक्ट है। Santoshini Ratha, answer question number 6. Which of the following character was not studied by Mendel? Plant height, position of flower. Yes, Sital, very good. कोई एक अगर आंसर दे देगा ना तो इमीडिएट आई विल कंक्लूड, ओके? तो उनको क्रेडिट जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल यू आर राइटिंग, बट जो एक आंसर देगा उसको क्रेडिट जाएगा। तो जो पी प्लांट्स आपका था, ठीक है, which is not correct or which is correct? It is a dicot plant. It is correct. It is a member of Fabaceae. Yes, it is correct. It has short lifespan. It is also correct. But it shows male and female flowers separately or bisexual? It is separate or bisexual? तो जो bisexual concept था वो correct है, but unisexual concept not correct. Therefore, the answer is third option. सबको समझ में आ गया? समझते बुझी पारल? এটা करेक्ट स्टेटमेंट नुह, कारण এটা बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल नुह। बुझेला? फाबासी फैमिली मध्य गोटे डाइकट। Which of the following pairs indicate recessive character in pea plants? White flower, that is recessive. But axillary flower or axial flower, is it recessive? No. तो बताइए, दोनों recessive होना चाहिए। Which one? Tall is not a recessive character. Yellow cotyledon is not a recessive character. Axillary flower is not a recessive character. And what should the answer? A key option left. Wrinkle seed and terminal flowers. Very good, very good, very good, very good. Very good. Viraja, very good. Sital, Lily, सब अच्छे हो। Lakshmi, Pujari, very good. कोटा contrasting noho. Round yellow, green yellow, tall dwarf, violet white, which is not contrasting. अरे राउंड चाहिए तो रिंकल्ड होगा ना शीतल, गुड। जो पहले बोलेगा उसका नाम लेंगे। राउंड येलो, राउंड रिंकल होना चाहिए, राउंड येलो है तो इट इज नॉट करेक्ट। ग्रीन के साथ तो येलो होगा पॉड में, अगर ये कोटिलेडन होता, सीड होता तो येलो ग्रीन होता। समझ में आ गया? तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा? संतोषिनी, वेरी गुड, 1। नंदिनी हो रहा है, शीतल, शशि, ओके, आगे चले। What is the advantage of using garden pea plant? All are correct, but except one. True breeding क्या rare है? That is not the answer. It can be crossed and self-fertilized easily because it is bisexual. So 2 and 4 correct. इसका lifespan is very short and produces large number of offsprings. That is also correct.
But true breeding varieties where rare or scarcity is there, no. You'll find a lot of true breeding also. So the answer is 1. इसको लिख लो. Lakshmi, if it is bisexual, जब आपने F1 जनरेशन बनाए थे तब आपने क्रॉस पॉलिनेशन किए थे, और जब आपने F2 जनरेशन बनाए थे तब आपने हाइब्रिडेशन किए थे. इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट. वो पूछा है कि व्हिच इज नॉट करेक्ट. बुझेला? व्हिच इज नॉट करेक्ट सेटा पचरा होची. आगो जाउची शीतल, स्मिता. ओके. The main reason of the discovery of law of heredity. बताओ. He analyzed every traits independently. He was lucky that he didn't come across linkage. His plants were true breeding. All of these. The main reason for the discovery. He analyzed every trait independently. He was lucky that he didn't come across linkage. His plants were true breeding. All of these. जल्दी बोलो. किए कोई परिबो? Good. Lakshmi Pujari. Clapping गला तुम पाई ना. जे आगो कहबो clapping जीवो. Santoshini also correct. जे आगो कहबो ताको तम नेट रे प्रॉब्लम थिले भी मुगे जाननी. इमास्कुलेशन न माने किए कोई परिबो को. इमास्कुलेशन न माने जे आगो कहबो ताको क्लैपिंग जीवो. Lily, can you try? What do you mean by emascular? Santoshini रथ है ना. हमें स्पीड है करिबा ना. संतोषिनी रथ. ओके. Lakshmi also correct, but question number 13 you answer. Who will answer quickly? Tanada पढ़िबी. किए कोई परिबो जल्दी. एलिलीज है क्या? जल्दी. Homologous chromosomes? No. Linked genes, dominant genes, or alternate forms of a gene? Sital, Santoshini. Yes, Lakshmi बाद में करेक्ट कर लिया. ओके. Lakshmi Pujari. Credit goes to Lakshmi Pujari. Alternate forms of a gene. कैपिटल टी स्मॉल टी क्या अल्टरनेट फॉर्म नहीं है? डोमिनेंट जीन्स क्यों होगा? एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा. ठीक है. अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन. जदि सब टॉल थिला फिर ड्वार्फ आसिला, एटा कोन बुझौची? डोमिनेंस बुझौची. F2 जनरेशन रे आसिला डोमिनेंस बुझौची ना प्यूरिटी ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन बुझौची? नहीं. डिपेंडेंट असॉर्टमेंट बुझौची ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस बुझौची? तो किए आगो कोची? Yes, Lakshmi, Santoshini, both are correct. Law of segregation, Lily also correct. Law of segregation can be called as purity of gametes.
Gametes are pure, therefore new combination is possible. Very good. Question number 15. An organism with two identical alleles, dominant, homozygous, heterozygous, recessive, both are same. तो उसको हम क्या बोलेंगे? Dominant or recessive? Or we'll say homozygous or heterozygous? No, both are same. Yes, Santoshini correct. Homozygous. Agar both are different, heterozygous. Maybe dominant, maybe recessive. That is different thing. Both are same, dominant. Maybe recessive, but homozygous is correct. अगर capital T होगा तो dominant homozygous, small t, recessive homozygous, but homozygous is always correct. In monohybrid cross, the F2 phenotype is dash. Santoshini Ratha. Are Mona Lisa, you are not there, I think, today. हम लोग क्या क्या पढ़ाया? आप नहीं थे. Yes, 3:1. Mona is correct. Oh, college थिला. ठीक है. आगो जाऊची. The genotype of the F1 heterozygous tall plant is F1 रो कौन होगा? क्या आगो कोई देखिए? Try. Vijay Lakshmi, very good. Santoshini, very good. Lakshmi, heterozygous Sachi. Mona Lisa, very good. Lily, very good. Hala? Heterozygous Sachi, F1 Achi. Kuda habo? Eta habo au kaun seta? Capital T, small t ho? Mona Lisa, you can talk also, no problem. Mendel's principle of segregation was based on dash. Separation of alleles during dash. Gamete formation, Santoshini is correct. Vijay Lakshmi also correct. Lily correct, Mona Lisa correct. During pollination, during gamete formation, because gametes do fuse to form the zygote. Sexual reproduction में वही तो important होता है. Okay. When an individual is having both the alleles of contrasting character, it is said as homozygous or heterozygous? Heterozygous. Yes, it is heterozygous, Mona. Good. Suchismita also joined, I think. Suchismita, आप कहाँ चले गए थे? ठीक है, class था शायद. Okay, no problem. Next. Law of dominance. Oh, college रे चले जाओ. ठीक है. Law of dominance is the result of देखाओ तो.
ऑप्शन नहीं आउ बैक क्रॉस ही मारिया पड़िबो हला ऑप्शन नहीं तेणु हमको बैक क्रॉस मारिया हला आगु जाउची which of the following law was discovered first by Mendel whatever law of dominance of a key what are first The law of dominance. correct এটা ফার্স্ট হবে না তবে আসো নেক্সট ল অফ ডমিনেন্স হবে এটা কহ মনে এটা কহ The term gene was coined by Johnson. Factor. It was factor. आगे चले गुड एटा कष्ट क्वेश्चन ना सहज क्वेश्चन खोजिल मेंडेल crossed a pure white flower with a dominant violet the fascination कौन हबो F1 टा कौन हबो अरे violet से तो white रो crossing हेले F1 generation कौन हबो के कोई परियो all violet हबो की अरे F1 पूरा कलर हबो नहीं all violet हबो कौन एसम लागुची F2 नो F1 कौन हबो all violet हबो संतोषिनी करेक्ट मोनालिसा all violet हबो कि नहीं विजय लक्ष्मी करेक्ट मोनालिसा करेक्ट एटा टिके कष्ट क्वेश्चन अछि की देखिया की कोइ पड़छि रिसेसिव कैरेक्टर एटा बहुत सहज क्वेश्चन देखिया के कोच एटा रिसेसिव कैरेक्टर केते परसेंटेज Sir, 1/4. यस 1/4 वेरी गुड हला गुड आगु जीबी एटा कष्ट अछि कि देखिलो ए क्वेश्चन ता के कोइ पड़छि जी भी कहले चढ़ो कि के कहि पड़छि देखिया 25 3/4. तुम कहछो 3/4 आउ किछि आंसर अछि की 1/3 very interesting केमिते हला को in a monohybrid cross the F2 progeny shows 3/4 tall से पचाची from the group of tall plants अरे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल all tall ताले 1/3 हबो कि नहीं अरे Yes. होमोजाइगस tall केते 1/, हेटेरोजाइगस केते हेटेरोजाइगस केते 2/3 तेनो 1/3 क्वेश्चन रे लिखि दियो it is very interesting question and you write down એટલે આજે અમે 25 क्वेश्चन करले I hope you people have enjoyed polygenic and pleiotropic inheritance लोग को समझ में आया बुझेला
बुझिपाला तो पिलाने Yes, sir. जे में डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेले एंड मेंडेलियन डेविएशन पढ़ेले लॉ ऑफ डोमिनेंस को बुझेले एंड फिर हमें बुझेले इंडिपेंडेंट असर्टमेंट कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ेले को Sir, आज डोमिनेंस पढ़ेले प्लियोट्रोपी पढ़ेले हमें आउ क्वेश्चन କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन करे देबी काहेला टाइम ही गेलानी ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन करे दोची एटा को कनेक्ट स्क्वायर is useful for understanding only genotypes na only phenotypes na both sir, both. हाँ both बहुत क्वेश्चन अच्छे हम पठे दो तुम लोग दरकार पड़ले ହେଲା चले आज इतनी के रहइबा Yes, sir. ओके थैंक यू Oh,